अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। If I were you and you were me, I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। Light it up, that's how I see you, खुद को मेरी नजर से देख। If I were you and you were me, मैं ऐसे टूटता कि टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतज़िर। मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से ज़वाल देखे हैं नूर बहुत। ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक। हर खौफ से आज़ाद कर दो मेरी ज़ात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को। जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो। गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, ना तुम्हें आए शर्म ना हमें आए मौत। मैं सेन हूँ इस मिनट, नेक्स्ट मिनट हम साइको। इंडस्ट्री करे फॉलो, ब्रांड्स गो वेयर आई गो। ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माई चेक, मुझे बातचीत नहीं चाहिए। आई गॉट बिल्स, मर्द के अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काय के। फ्यूचर दिखता नहीं है, फ्यूचर इज व्हाट आई से। वो साथ खाएं कहना पड़ता नहीं वो भाई थे। आई डू अ डाई फॉर द गैंग, बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे। साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज। आई रैप फॉर अ पर्पस, ये करियर है कॉज। You expect me to be perfect and I'm just full of flaws। कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस। मैं बिना ताज का बादशाह, got nothing to lose। I'm crossing lines just to cancel out the booze। अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू। दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। दिल में सवाल बड़े, बिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले। थप्पड़ ये गाल पे, इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे। लाया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे। देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग बेटे। पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे। ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता। किससे लड़ूं जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा। रैप मेरी जान में कराची के लिए जान दे रहा। ये लड़के लिखते मुझे दिखते अपने बार्स भाई, डरता नहीं गिरने से बस दुनिया से नाराज भाई। आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई, लफ्ज कैसे तोलते जब भारी ये आवाज भाई। दिल मेरा साफ में इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई। फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई। सर अपना नोच रहे, हम सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे। I ain't a role model आज भी on the road अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में। डील होती क्लोज, उठते साथ मुझे होश नहीं। इंडस्ट्री मेरे लन पेपर नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं। रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने, अफसोस नहीं। डरते नहीं हम मौत से, मुसाफिर मरते रोज भाई। I ask God why you made fear, सब रोना चाहते but we hate tears। I'm never sober but I stay clear, समझ से बार में जैसे शेक्सपियर। अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं तू देख मेरी सादगी। दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबरी, लोग मेरी मेहनत का फल खाना चाहते आज भी। ये बातें नहीं कागजी, मैं खुद को देता दाद भाई। सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई। हाय सुंदर रूम मुझ तक पहुंचेंगे क्या खाक भाई, गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों।
जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। What up, guys? Welcome to the stream. और send it. लो भाई मैंने फोटो भेजा, देखो। रुको पूरा Responding to the latest 38 call. कर दिया चालू हाँ, आ जाओ। Dispatch any bike unit available? के लिए तो बुरा लग रहा है 1141 किसके लिए? सबके लिए इतना अच्छा Squad चीज eyes नहीं on देखता है। RX-7. क्या? कल रात का अच्छा, चीज कल नहीं रात का देखता है। भाई क्या चीज था at भाई? Digit Square. कहाँ इंटरव्यू किधर? हो रही 11-200? He's on radio 3, I guess. ए फॉर्म स्विचिंग टू रेडियो 3 11-200? इस कायती आ रहा वाला कौन सा मॉड पैक? एनसो एनवी। overcome the depression and anxieties and like अब मैं काफ़ी हील हो चुका हूँ तो अब सोचा कि लाइक फिर से पीटी ज्वाइन किया जाए। मैंने लॉस एंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर्स में एंड टीवीज़ में काफ़ी देखा है, सुना है, तो इसलिए लॉस एंटोस में आया एंड अप्लाई किया। लाइक यहाँ की पीटी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है एंड यहाँ के जो क्रिमिनल्स क्राइम रेट है काफ़ी लाइक पीटी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट कम हुआ है। अगर इतना आपको आइडिया है तो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द डिपार्टमेंट दैट यू गोना जॉइन? क्या है डिपार्टमेंट, कैसे सब सेक्शंस हैं एंड ऑल? ओके तो सॉन्ग नेम ओके अफसाने। सबसे पहले आता है सैन एंड्रियास स्टेट पुलिस, दैट इज SASP, जो पूरे सैन एंड्रियास का सबसे हेड होता है। लाइक फिर उसके बाद आते हैं आपके उसी के अंदर तीन वो आते हैं पार्ट्स होते हैं, लाइक LSPD लॉस एंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, PCSO प्लेन कंट्री शेरिफ ऑफिस एंड द थर्ड इज पार्क रेंजर। So if you have an option to choose between these three, आप क्या चूज करेंगे? Sir, I prefer LSPD just because मैंने कभी BCSO में वर्क नहीं किया है। I heard about LSPD and like काफ़ी चीज़ें मैंने थोड़ी न्यूयॉर्क में थे ना NYPD में हाँ। BCSO वैसे काम करते तो NYPD में BCSO का मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अलग था, उनका डिपार्टमेंट अलग था। मतलब उधर ब्लेन काउंटी होता है क्या? मतलब नहीं उधर प्लेन कंट्री नहीं है सर, उधर दूसरा होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हाउ डू यू इवन अंडरस्टैंड कि BCSO कैसे वर्क फास्ट सर वही तो मेरे को लाइक BCSO करना भी है, लाइक ट्राई करना है कि BCSO के डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ LSPD जिस बिकॉज कि मेरे को BCSO की नॉलेज नहीं है। यार मेरा पासवर्ड क्या था? अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप उसको पहली बार करो तो सर फिर उसको ट्रेनिंग वेनिंग और चाहिए होती है। व्हाई LSP? अभी अगर मैं पूछूं ये मत बोलना कि मेरे को बाकी चीज़ का नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई। नहीं सर ऐसा ये कुछ हो नहीं। जाता है उसमें बाकी सारे ऑप्शंस मेरे लिए गुड नहीं है, ये बचा हुआ अच्छा यही है LSPD। सर जस्ट बिकॉज न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा LSPD के डिपार्टमेंट थोड़ा सिमिलर ही वर्क करते हैं सर, जैसे लाइक SOPs वगैरह उनकी लाइक काफ़ी हद तक सेम ही होती है एंड मुझे याद है SOP क्या है, व्हाट इज SOP? सर लाइक SOP basically SOP stand for standard procedure immobilization, I guess. नहीं sorry standard operating procedure. अभी काम करो, थोड़ा सा पानी पी लो, खराश हो रहा है उसको थोड़ा सा सही करो। ओके एक सेकंड। पासवर्ड इंक्रीज ओपी। कल की चेस में तुम्हारा POV नहीं देख पाया, लाइव में नहीं देख, पता नहीं है बहुत लेट नाइट हुआ, मैं कुछ PD का काम कर रहा था और अचानक ये सिचुएशन आ गया था।
अब ठीक है सर? नहीं पर ठीक Yes. है, इट्स फाइन, विल मैनेज। Got better. So coming back to SOP, what is SOP? Sir, SOP is a stand for Standard Operating Procedure. No, I don't want the full form. Multiple choice questions नहीं पूछ रहा हूँ मैं ओके सर, SOP लाइक SOPs हमारी describe बेसिक करो रूल्स क्या एंड है रेगुलेशंस होती है जिसमें हमारा लाइक पीडी कैसे वर्क करती है, कैसे डिस्पैच एंड ऑल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे कोड्स, हमारी यूनिफॉर्म्स, हमारे रोस्टर्स में सब प्रेजेंट तो होते हैं, SOP लाइक क्या एक रूल बुक सिर्फ काइंड SO ऑफ। ना कैन यू प्लीज टेल मी SOP क्या सिर्फ PD में रहता है या फिर SOP बाकी जगह पर भी रह सकता है SOP बाकी तो BCSO एंड सारी उसके सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बस अगर लाइक BCS जैसे is also comes under PD right this is यस what सर। I'm asking SOP क्या सिर्फ PD के लिए वर्कबल है या फिर बाकी सब चीज़ों के लिए बाकी सारे जैसे सोच लो का एग्जांपल दे रहा हूँ क्या सिटी हॉल में कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हो गया या फिर EMS में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हो गया या फिर सोच लो कोई भी स्टोर ओनर है उनके लिए हो गया उनके लिए भी SOP रहता है या फिर सिर्फ ऑफिसर्स के लिए SOP रहता है मैं वही पूछ रहा हूँ सर सिर्फ ऑफिसर्स के लिए रहता है, और उसके लाइक जो कोड्स वगैरह जो हम बोलते हैं वो एक EMS भी वो कोड्स वगैरह ट्रैक तो करते हैं, बट लाइक SOP जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिफॉर्म्स हमारी SOPs में जो होती है वो सब सिर्फ हम ऑफिसर्स ही फॉलो करते हैं। अगर SOP की बात आता है तो वो तो बाकी दो ऑफिसर्स हैं हम लोग देख लेते हैं रही बात if I really want to know why do you want to join the department and what else you can provide to the department because you have already came for an interview earlier days right Yes, so sir. this will be your second time so I feel like you have observed how we are serving the city right so yeah, like your addition how will it affect or change the process that we are following yeah, what would be the benefits that we're gonna get if you join I would really like to know Well, this is a this is a difficult question. it's very straightforward question like what are the capabilities that you have that you feel like if you join the department that's gonna eventually benefits us because if you like agar benefit nahi hota hai, तो why should I hire you tell me Sir, basically like काफ़ी लाइक जजमेंटल स्किल्स मेरी अच्छी है, एंड टीम वर्क करना मैंने काफ़ी लाइक न्यूयॉर्क में भी काफ़ी टीम वर्क किया है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो लाइक ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को किसी भी ऑफिसर से किसी भी जो मेरे कलीग हैं मैं उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सकता हूँ, एंड जो मेरे सीनियर्स हैं मैं उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफिसर्स देखे हैं जो ऑन ड्यूटी तो अपने ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करते हैं पर ऑफ ड्यूटी अपने ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लाइक आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन। I want to ask you one thing. एंड यस सर। During your time in New York, जब तुम न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे, can you tell me 3 things that जो तुमने किया है उधर that you feel stands out? वेल ओके, सब पहला चेंज जो मैंने किया था दैट इज़ लाइक वहाँ ऑफिसर जो हमारे लाइक मेनली उस वक्त जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं कैडेट था, एंड जो मेरे ऑफिसर्स थे वो प्रॉपर जो उनके कैडेट्स वगैरह थे जो लाइक FTOs इशू करते हैं, और वहाँ पे क्या होता था लाइक FTOs थे जो ऑफिसर्स को एक ऑफिसर्स को इशू करते थे कैडेट को कि लाइक इन ऑफिसर को इन कैडेट को ट्रेन करना है। तो आफ्टर दैट लाइक काफ़ी मैंने जल्दी चीज़ें सीखी अपने ऑफिसर से, जो मेरे ऑफिसर थे वो काफ़ी Okay, मेरे wait. कलीग I'll थे। reframe my question. ठीक है? As per जो आपका CV है, right? आप you were a cadet. 1 month of your Yes, sir. cadet phase आपको promotion मिला, you became an officer, right? यस सर। You have 1 month experience of an officer, correct? यस सर। In 1 month of experience, you earned an award of being the officer of the month. यस सर। I want to know ऐसे तुमने क्या किया to earn that award because 1 month of being an officer and straight up earning an award for being an officer of the month is a very high reputed thing. यस सर। So that's why I want to understand कि ऐसा क्या क्या किया है that led you to achieve something like this. ओके, सो बेसिकली सर एक्चुअली क्या हुआ था, तो जब मैं कैडेट था तो मैंने जितनी फील्ड ट्रेनिंग्स होती हैं और SOPs थी सब मैंने अच्छे से पढ़ी एंड लाइक ऑल, एंड उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सिटी में वीड्स के ऊपर, लाइक कि वीड काफ़ी ज़्यादा लोग
यूज़ वगैरह कर रहे थे, तो उसके ऊपर मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। एंड ये वीड वगैरह जो भी लाइक जो भी कुछ लोग वीड वगैरह सप्लाई कर रहे थे शहर में, मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था। एंड आफ्टर दैट ये मैंने अपने जो मेरे हाई रैंकिंग ऑफिसर है, मेरे नेक्स्ट हाई रैंकिंग ऑफिसर, मैंने उनको इस चीज़ के बारे में बताया था। देन आगे उन्होंने उस चीज़ पे अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर को बताया और उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट हुई। देन आफ्टर दैट मेरे को ये ऑफिसर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था अच्छा, एंड प्रमोशन। आपने जब एक्सप्लेन कर रहे थे, यू हैव सी सेड समथिंग अबाउट let's say your decision making skill, right? यस You're सर। a good decision maker. Okay, एक situation बताता हूँ, कल ही हुआ ये situation. I want to see how would you make decision over there. What would be your decision? Okay. So there was a Oh, 38 हो call. गया. Do you understand the codes? यस आई एम 38 का familiar with means the क्या? codes. सर स्टोर क्या वो हाउस रॉबरी इट इज। so never mind. So you might not know about it. Anyways, 38 is something which is a suspicious activity. Can be anything, not only house robbery. Can be anything. ओके Right? So there was a suspicious activity nearby Vinod store. As I was the first responding unit, सोच लो मेरे जगह पर आप हो, ठीक है? You जो are मैं the ट्राई कर first रहा था वही था. responding मैं unit. बस लाइक कैप्सूल का Right? स्मॉल केस में. You are a Alright, SU sir. licensed officer. That means you were driving a Challenger at that time, right? Okay. So you have seen let's say a person inside a vehicle moving around. And as soon as you reach there, the person started fleeing and evading करने का कोशिश कर रहा था. According to the vehicle class, हाँ? क्या कर रहा था? Fleeing and evading. Okay. According to the vehicle class, आप उसके हिसाब से गाड़ी चला रहे हो. ये चीज स्टार्ट होता है एक नॉर्मल स्पेक्टर कस्टम से. देन जब उस बंदे को लगता है कि आफ्टर चीज ऑफ लाइक 7 to 8 minutes, जब लगता है कि नहीं हो रहा है मेरे से, एंड ही कॉल्स फॉर अ बैकअप. द बैकअप कम्स, स्विच टू अ जीटीआर. स्विच टू अ जीटीआर. उसको भी आप फॉलो करो. यू आर द प्राइमरी यूनिट. ठीक है, ध्यान से सुनना. आपके साथ इवेंचुअली एक कैडेट बैठा था जो मैंने अभी बता रहा हूँ. ये बाद में आएगा. अब एक गाड़ी चेंज हो गया. आ रहे आपके साथ 2-3 और ऑफिसर्स है बैकअप में ऑब्वियसली, जो बाकी सारी यूनिट्स लेके हैं. सेकंड जो गाड़ी चेंज करने वाला, फर्स्ट गाड़ी चेंज करने का, दैट वुड बी द जीटीआर. उनसे भी हुआ नहीं. सो व्हाट दे डिड इज लाइक दे स्विच्ड इवन इन रेड गैराज. ठीक है. तो जो प्राइमरी सस्पेक्ट है वो कोई और एक जीटीआर में चला गया और रेड जीटीआर वाला स्प्लिट कर दिया. मतलब बेसिकली दे स्प्लिट इट अप. ठीक है. तो एज अ प्राइमरी यूनिट आप प्राइमरी सस्पेक्ट के पास भाग के गए, तो आप फिर से आपको और एक जीटीआर का लाइक विजुअल मिल गया. Okay. बराबर. Now you started chasing them again. Now it has been like 45 minutes since you are chasing this people. Meanwhile, जब आप उस नॉर्मल क्या बोलते स्पेक्टर कस्टम को चेस कर रहे थे, दिस ऑरेंज जीटीआर जो अभी नए आए हैं, इट वाज इन्वॉल्व्ड. ही ट्रैक्ड यू एंड स्टफ. पिट मैनोवर करने का कोशिश कर रहा था पीछे से आके आपको. ऑल्दो यू समहाउ वो किया था, क्या बोलते हैं, आपने उसको इवेट किया था एंड ऑल. राइट. नाउ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इज लाइक दे मेड अ जंप नियर द canals, is switched, and eventually उनका गाड़ी उल्टा हो जाता है. there is a guy जो उनको फिर से बचाने आता है और एक जीटीआर लेके. that would be the fourth vehicle, rather fifth vehicle getting involved. Alright, sir. what would be the force of escalation that you're gonna push impose right now? Tell me. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी गाड़ी मेरे लाइक यू ऑलरेडी मेंशन कि मेरे साथ एक क्रेडिट भी है मेरे व्हीकल में. तो जितने भी व्हीकल के मैंने चेस किया, सबसे पहले मैं अपने जो क्रेडिट है मैं उनको बोलूँगा कि उनकी नंबर प्लेट रन करें. और जितने ज़्यादा एविडेंस. फोर्स ऑफ एस्केलेशन बोला मैंने. क्या करोगे नहीं पूछा है. क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसके हिसाब से आंसर दो. सर लाइक प्ले
लास्ट वाला जो पार्ट बताया, आप थोड़ा सा एक बार रिपीट कर सकते हो? Sorry, can you please repeat again what you have said? I couldn't hear. सर जो आपने लास्ट में लाइक लास्ट वाला पार्ट बोला वो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? So, starting from Spectre Custom to a red GTR to an orange GTR, the orange GTR was involved in the Spectre Custom chase. Now the orange GTR got flipped, and there is one more vehicle who come in between and tried to help them. Now tell me, how would you escalate force in this situation if you are the primary unit and you are the commanding unit? वेल सर मैं उस वहाँ पे लाइक सर उनका मेजर 50 हुआ है वहाँ पे। वो जो Yeah. फोर्थ कार थी जो कार फ्लिप हुई, उसमें से वो निकल के वहाँ पे फिर भागने लगे। नहीं, वो गाड़ी के अंदर ही है, और गाड़ी के अंदर गाड़ी से नहीं। एक गाड़ी आता है, उसको पिट मार के सीधा कर देता है। मार के सीधा कर मैंने दिया। जस्ट अभी बोला कि अभी तक उन लोगों ने पिट नहीं मारा है, जिस गाड़ी पलट गया। आपका फोर्स ऑफ एस्केलेशन में पूछ रहा हूँ, व्हाट यू गोना डू नाउ? अरे सर वेल इस पोजीशन पे मैं अपनी जो मेरी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है सर, प्राइमरी है सर मेरे पास। You are the primary unit. सर मैं अपने व्हीकल से उतरूंगा, जो मेरे पास टेजर है मैं उसको उनके ऊपर पॉइंट करूंगा और उनको बाहर आने का कॉल दूंगा। अगर वो उस कॉल को डिसरिगार्ड करते हैं और जो उनके लाइक जो दूसरी जो उनके साथ पिट आई है वो पिट करने के लिए आगे जाती है, तो अगर मेरे को अगर उस सिचुएशन में अगर वो पिट करती है और पिट करने के बाद अगर थोड़ा गाड़ी उनकी ठीक होती है और मैं उन्हें दोबारा पॉइंट करूँगा, अगर वो नहीं सुनते और वो स्टिल अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं, एक्सलेट करने की कोशिश करते हैं, देन मैं उनको टेस्ट करूँगा थ्रू द विंडो। अगर तो विंडो लाइक टेस्ट लगा नहीं नाउ। देन नाउ मैं अपनी व्हीकल में वापस सेट होके देन दोबारा चेस कंटिन्यू करूँगा। मीनवाइल व्हाट ही हैज डन कि वो जब उससे उसका जो फोर्थ वाला जो मैंने बोला और एक व्हीकल आता है, वो नीचे आता है, वो व्हीकल को फ्लिप करता है, तो धक्का मार के फ्लिप करता है और उस फ्लिप के चक्कर में एक ऑफिसर डाउन हो जाता है। Okay. ऑलराइट, नाउ टेल मी हाउ वुड यू एस्केलेट फोर्स ऑन देम? सर वेल इस सिचुएशन में फिर मेरे को जो मेरे Do not you are the highest commanding officer in the situation. Do not ask for like मैं हाई कमांड को पूछूंगा। नहीं मैं सिर्फ हाई कमांड पूछने के लिए नहीं कह रहा। हाँ, ये बताओ। फिर सिचुएशन में अगर मेरे को अपने लीथल्स की ज़रूरत पड़ी तो अपने लीथल्स का यूज़ करूँगा, और मैं अपने लीथल्स जो मेरे पास पिस्टल है मेरे पास, मैं उनसे उन जो चीज़ें व्हीकल है मैं उनका टायर पॉप करूँगा। चलो, आई गॉट माय आंसर। गाइस, रेस्ट ऑन यू। ऑलराइट, आपने बोला कि ड्यूरिंग योर 1 month you had done multiple like weed related operations, right? सब I just want to understand कि if you're performing a normal patrol, you're on code 1, ओके and you roam around some area where you get some fragrance of weed, and आप वो थोड़ा जाके देखते हो and you realize it is actually weed. ओके I want to know how would you approach the situation. Consider it to be you've been to do you know about Lake Vinewood? नो सर। Okay, there's a place called Lake Vinewood which has beautiful mansions. Okay, ओके consider you were roaming around Lake Vinewood and you got some scent of weed and you entered a property inside Lake Vinewood and you see weed grown over there. ओके Start to end, what would you do out there? सर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरे को वीड की स्मेल आती है तो पहले तो वहाँ मैं अकेला जाऊँगा ही नहीं, बिकॉज वो डेंजरस हो सकता है। मेरे को नहीं पता वहाँ पे कौन लोग हैं, उनके पास कितने लीथल्स हैं। जब तक मैं अपने लिए बैकअप नहीं मंगा सकता, जब तक मैं अपने लिए मेरे लिए कोई बैकअप नहीं आएगा तब तक मैं उस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता, या मेरे पास कुछ सर्च वारंट होनी चाहिए तभी मैं उस प्रॉपर्टी में एंटर करूँगा। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। Okay. आफ्टर दैट लाइक मेरे को जितना मैं दूर से उस प्रॉपर्टी के जितना दूर से मैं एविडेंस कलेक्ट कर सकूँगा, काफ़ी दूर से, लाइक नॉट काफ़ी पास जाकर मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी से जितना ज़्यादा दूर होके मैं अपना रेडियो पे पहले बैकअप कॉल मंगाऊंगा। एंड आफ्टर दैट
मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनसे उनके साथ मिलके मैं एक एविडेंस कलेक्ट करूँगा, ताकि मैं कोर्ट से परमिशन लेके एंड वो एविडेंस को दिखा के उस घर के सर्च वारंट करवा निकलवा सकूँ। Okay. And so you'll go, you'll take evidences, you'll give it the evidences to a judge and then you leave the area, right? यस सर। उतने में अगर किसी ने आके वो वीट के साथ कुछ टैम्पर कर लिया तो सर वो चीज़ फिर बात पे थी, अभी उस एरिया में मैं नहीं कर सकता ना सर, वो क्योंकि वो डेंजरस एरिया हो सकता है, वहाँ पर मेरे को नहीं पता मेरी जान खतरे में है या फिर नहीं कोई पर मेरे को मार दे। चलेगा, आपने एविडेंस लेके आपने निकाल दिया, ठीक है, आप चले गए एविडेंसेस लेके, ओके और फिर जिसका भी वो वीड था ही कम्स एंड जस्ट लाइक क्लियर्स द एंटायर एरिया एंड लीव्स, देन व्हाट? सर इफ़ ही लीव एंड स्टिल मैं वहाँ पे जो मेरी सर्च वारंट मेरे को कोर्ट से मिलेगी, मैं वो एरिया सर्च करूँगा, जितने भी मेरे को एविडेंस मिलते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करूँगा एंड आफ्टर दैट लाइक जितना भी उस एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस एरिया को उस अगर वहाँ पर कोई भी अच्छे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं तो उस एरिया को सीज किया जाएगा एंड वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेट होगी। और अगर वहाँ से वो आप जैसा कि आपने बोला कि लाइक अगर वहाँ से चला भी गया है अपनी बीट्स वगैरह लेके, तो उसके अगर मेरे पास एविडेंस होंगे तभी मैं उस चीज़ पे आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मेरे को like, कैसे पता होगा ना सर कि कौन आया किसने लेके चला गया। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओके। यू you've run like तुम्हारा टोटल ड्यूटी टाइम क्या था अभी तक, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू सर्वड एनवाईपीडी? सर ऐसे तो लाइक नहीं पता मेरे को कि कितना टाइम सर्व किया, बट आई लाइक ऑलमोस्ट मैंने 2 to 3 months या उससे ज़्यादा किया है। 2 to 3 months? यस सर, शायद उससे ज़्यादा किया है। You've done more than 3 months? यस सर, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। If you're not wrong, आपका वर्क एक्सपीरियंस रेज्यूमे में बताता है 2 months. So are you saying that तुम्हारा रेज्यूमे inaccurate है? नहीं सर, 1 month कैडेट रहा था एंड लाइक 1 month उसके बाद मैं ऑफिसर रहा था एंड उससे लाइक ऑफिसर के अलग मेरे 1 month मतलब ऑफिसर और कैडेट से अलग मेरे को ट्रेनिंग मिली थी 1 month की। कौन सी ट्रेनिंग? सर न्यूयॉर्क में ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाद ट्रेनिंग होती है, तो वो मिली थी मेरे को, तो प्रॉपर लाइक यू कैन से 3 months। ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम? हाँ सर, न्यूयॉर्क में एंट्रेंस एग्जाम ओके, होता टेल मी है। वन थिंग, जब ये एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आर यू ऑलरेडी अ लियो? नो सर। So I asked you how long have you been performing duties? You said 3 months. 2 months सर एक्चुअली। Are you sure? यस सर, तो 1 month ऑफिसर एंड 1 month कैडेट। ये एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या क्या करना पड़ा? सर एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी लाइक एक काइंड ऑफ जैसे इंडिया में यूपीएससी टाइप होता है ना, उस टाइप से हुआ था वहाँ पे न्यूयॉर्क में एंड काफ़ी बेसिक चीज़ें एंड थोड़ा जनरल नॉलेज एंड ये सब चीज़ें चेक हुई थी एग्ज़ाम में एंड ओके, सिंस आपने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड वो सब, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता रहेगा व्हाट आर केस लॉज। केस लॉस नहीं पता। ओके, क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट? सर आई गेस 3 अमेंडमेंट है। यू गेस और यू नो? सर आई गेस। ओके, बताओ कौन सी 3? सर पहला अमेंडमेंट है कि लाइक सिविलियंस को लीथल्स कैरी करना अलाउड है, लाइक वो भी प्रॉपर लाइसेंस लीथल्स कैरी करना अलाउड है, पर वो लाइक ऐसे अपनी जैकेट वगैरह में छुपा के कैरी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि लाइक जैसे हम ऑफिसर्स के पास एक पूरा प्रॉपर बैग होता है लाइक पाउच टाइप का होता है, इसमें हम अपनी लीथल्स कैरी कर सकते हैं, तो दे कैन कैरी यू कैन से दे कैन कैरी license lethals in their jackets and all. मुझे And the second amendment is नो वन सेकंड स्टॉप, आपने बोला कि जैसे हम ऑफिसर्स कैरी करते हैं वो नहीं कर सकते, राइट? yes sir. अगर कोई बंदा, थिंक ऑफ मी एज अ सिविलियन, ओके, Okay. आई एम वॉकिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स लाइक दिस, Okay. ओके, व्हाट विल बी द चार्ज यू पुट ऑन मी? सर अगर आप ऐसे शहर में घूमते हो लीथल्स को आउट करके, देन मैं आपको जो भी गन लाइसेंस है वो आपसे ले लिया जाएगा। व्हाट विल बी द and चार्ज यू पुट ऑन मी?
चार्ज सर, चार्ज सिंपली आपको फाइन मिलेगा और आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। वही है, फाइन मिलेगा ऑन व्हाट बेसिस, चार्ज क्या होएगा? सर आप चार्ज यही होगा इसका कि आपने लाइक अमेंडमेंट फॉलो नहीं किया पहला। नेम ऑफ द जज। तो नेम ऑफ द चार्ज आई डोंट नो। ऑलराइट, ओके। सेकंड अमेंडमेंट? सेकंड नंबर में भी कोई भी लियो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना किसी परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। उस जैसे आपने उस सिचुएशन में मेंशन किया कि आपको वाइनवुड के एरिया में कोई प्राइवेट हाउस में वीड दिखता है, तो वो भी एक सेकंड अमेंडमेंट है जिसमें आप कोई किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड अमेंडमेंट इज कि आप किसी भी बिना सर्च वारंट के किसी भी सिविलियन या फिर किसी को भी सर्च नहीं कर सकते, किसी व्हीकल को या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिविलियन को, आप एक्सवाइजेड पर्सन को सर्च नहीं कर सकते बिना किसी सर्च वारंट के। ओके। कॉन्ट्राबेंस क्या होता है? क्या होता है, क्या चीज़ सर? कॉन्ट्राबेंस कॉन्ट्राबैंड सर, आई डोंट नो। ये अच्छा। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? सर मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा वीकनेस सर इज माय हार्ड वर्क। इज योर हार्ड वर्क? यस सर। व्हाई डू यू फील दैट्स योर वीकनेस? सर जस्ट बिकॉज समटाइम्स लाइक कभी कभी मैं अपना हार्ड वर्क में इतना वो हो जाता हूँ कि मैं अपने खुद पे ध्यान देना भूल जाता हूँ। और दिस माय वीकनेस, लाइक स्लीप मिस करना एंड ऑल। अगर मेरे को कोई चीज़ लगती है कि हाँ आपके मेरे से को हवा इसको आ वर्क रही है करना क्या? है जिससे मैं अपने आप को बेटर बना सकता हूँ या अपने डिपार्टमेंट को बेटर बना सकता हूँ, मैं उस चीज़ पे हार्ड वर्क करूँगा और उस चीज़ में अपने ऊपर कुछ भी ज़रा भी ध्यान नहीं दूंगा। और ये लगता है मेरे को कि ये मेरी वीकनेस है। ओके। कैन यू टेल मी व्हाट अ फेलन इज? व्हाट अ फेलन इज? फेलनेस? या व्हाट इज अ फेलन? फेलनी लाइक इज अ फेलन क्राइम। नहीं, फेलन। सर फेलनी सब, फेलनी विदाउट द वाई। फेलनी विदाउट फेलन द बोल वाई। रहा है, फेलन फेलन फेलन। FELON, सॉरी, सर FELON। फेलनी पता है, फेलनी स्टॉप पता है, फेलन नहीं पता है। ओके, फेलनी स्टॉप किस पे परफॉर्म करते हैं? तो फेरनली स्टॉप इसलिए परफॉर्म करते हैं लाइक सपोज कोई प्रॉपर जिसमें हमें प्रोबेबल कॉज होते हैं, कोई क्रिमिनल या फिर लाइक यू कैन से कोई किसी का व्हीकल स्टील करके जा रहा है, तो उस पे उस पर्टिकुलर पर्सन पे हम फेलनी स्टॉप कर सकते हैं। Okay. Send it text. I can ask if you have any questions. What Go is for your it, previous Patrick. rank? सर Previous rank? सर ऑफिसर। What do you mean by code of conduct? ऑफ कंडक्ट आई डोंट नो सर। Felon items hide है? Chain of command? नहीं. ओके, चेन ऑफ कमांड Felon is बेसिकली a person who पता है commits ना? a serious हाँ crime. पता है, अच्छा। चेन ऑफ तो कमांड। वो suppose person को you're एक an felon बोलते officer, हैं और उसके ऊपर एक felony perform okay, होता है. and in front of you there is a game warden standing, there's a sheriff of Lian County standing, there is SSP chief standing, and there is SSP trooper standing. ओके You being a officer, how should you like present yourself? Will you stand still or will you stand with your hands on the waist, moving here and there? नो सर, स्टैंड इन बिटवीन। खड़ा कैसे रहोगे? हाथ में कबर रख के हैं? हाँ, ठीक, या तो इन भाई साहब के ही ले लेगा. ऐसे। See, yeah, this is experience cop interviews, right? और Experience cop interviews have to be difficult. It can't be easy. ऑफिसर हूँ, कॉप हूँ, और लाइक हमें हमारे बेड पे एक इमरजेंसी बटन होता है। सपोज लाइक अगर कोई सिचुएशन चल रही होती है और हमें इमरजेंसी चाहिए तो वी कैन प्रेस। अभी जैसे खड़े वैसे ही खड़े रहना पूरा इंटरव्यू, ठीक है? ओके सर। LSPD is your preference, right? LSPD preference है ना? ठीक. Any 3 branches of LSPD within the city? जैसे वेस्पुची पुलिस डिपार्टमेंट are the 3 branches. सर वेस्पुची पुलिस डिपार्टमेंट एंड एक MRPD है सर, आई गेस। और एंड एक सर उधर है लाइक साउथ साइड में, आई डोंट नो नाम? द नेम। As an officer, what all did you achieve? Any one?
which means a lot to you. Yeah, sir. Mission Ro As नहीं an Mission Ro. officer, you as an officer था ना? Yes, sir. What one thing did you achieve which means a lot to you? So I didn't I know hear. that like जब ऑफिसर थे बात तो है यार वैसे एक्सपीरियंस की what खुलेंगी did यस you खुलेंगे achieve ऐसा वंस क्या एक्सपीरियंस तुमने इंटरव्यू था ओवर क्या उसके बोलते बाद हैं फॉर्म खुलेंगे कमाया डोंट which वरी means a lot to you? Sir, respect. I can say respect. And how did you earn those with that respect? Sir, I respect others and civilians. Like अगर कोई मेरे वाओ से छोटे एसएस रैंक में का लोगन के ऑफिसर है बाद तो आप उसकी मैं हाईएस्ट रैंक रिस्पेक्ट ऑफिसर हो करता रहा हूँ. है यस अगर कोई मेरे से सीनियर रैंक है, मेरे से टॉप रैंक के ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था. That all I earn. What do you mean by probable cause and reasonable suspicion? Okay, so probable cause means suppose there's a situation going on. एक probable cause like in the sense कि कोई क्रिमिनल है, आपके पास उसके प्रूफ्स हैं कि क्राइम उसी ने किया है, प्रॉपर आपके पास एविडेंस है कि क्राइम उसी ने किया है, पर रीजनेबल सस्पिशियस मतलब लाइक आपको शक है कि क्राइम उसी ने किया है, पर आपके पास कोई प्रूफ्स नहीं है, वैलिड प्रूफ नहीं है. Any one situational example? Suppose there are store like house robbery. We got a notification or a call, 911 call of a store house robbery. तो मैं वहाँ पे लाइक मैं ही कमांड यूनिट से मैं ही प्राइमरी यूनिट से मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरे को जहाँ जिस जगह से हाउस रॉबरी का कॉल आया वहाँ पे एक जना कोई एक सिविलियन घूम रहा है, इसने मास्क पहन रखा है, और मेरे को लाइक उस पर सिर्फ मेरे को तब सस्पिशियस लगा लाइक कि उस शक है कि हाँ उसी ने किया है, पर मेरे पास स्टोर रॉबरी उसी ने किया, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. और सपोज लाइक ऐसी मेरे पे एक और कॉल आता है वहाँ पे हाउस रॉबरी का, मैं पे रिस्पॉन्ड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक सिविलियन खड़ा होकर यहाँ पे उसके गेट में लाइक किसी के घर के गेट में तो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रीच इन करने की कोशिश, लाइक ब्रीच इन के सॉरी मैं लाइक उनके घर में चोरी करने के लिए घुस रहा है. तो दिस इज अ रीजनेबल सस्पिशियस, ओह सॉरी, दिस इज द प्रोबेबल कॉज. द प्रीवियस वन वाज द रीजनेबल Types of warrants? वारंट. Warrants कितने टाइप के होते हैं? Okay, so there are 5 types of warrant, but like मेरे को 4 ही पता है. The first one is bolo, and second is search warrant, the third is arrest warrant, and the fourth is kill on site warrant. Levels of forces? Level of, so What's okay, level there of are 5 level of forces? forces. One is less lethals, second is like lethals, and the third is I guess I don't know the 3. Molotov कौन से क्लास में आता है? इसमें Molotov Molotov. कौन से क्लास में आता Sir, Molotov I considered class 3. है? Rix, you can go. No, I have nothing to ask you. I asked most of the parts. You can go. Like, if you have anything, like anyone can ask. Else, I think my interview is over. Just one thing I want to ask after Sander's question. Can you tell me what is class 1, class 2 and class 3 weapons? Okay, so class 1 is sir nightstick and officer voice, you can say, and Okay. officer hand. And the class 2 is like pistols or pistols. And class 1 में एक चीज़ और बोलूँगा, taser. And Okay. class 2 में हमारे pistols वगैरह. And class 3 is SMGs and carbon rifle. तो फिर Molotov class 3 में कैसे आएगा? Wouldn't that be class Sir, 4? Sir, Molotov का like personally I have no idea, but like it's a heavy. So you're taking guesses in this interview basically. Sir, like I'm not guessing just because like Molotov is also a like heavy kind of weapon. Oh yes, Is since rifles and SMGs are class 3, won't Molotovs, grenades and all of that be class 4? Sir, मैंने class 3 तक का ही पढ़ा है, and class 4 का like Molotov and grenade वगैरह का I have no idea, but still like I get मेरे को लगा मेरे को कि class 3 में आएगा just because कि Molotov is also a strong weapon. ठीक है, I have no more questions. Alright, you can leave. You will be notified with the response. Okay, thank you so much, sir. Yeah.
2 पिस्टल दो मेरे को दोस्त. Take my class 2 man. हाँ, ये तो क्लास 1 है. Oh shit. वापस कर दो. Hello. Hello. Hello sir, आपका नाम? Hello. Sir, my name is Armin Art. Can you just send one of us your resume and medical certificate? Yeah, just give me one. केस लॉस बता दो है सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे ही बता दो. Yeah, किसको भेजा है? I got sir it. को- Okay. I got it. I'll share. Alright, just for introduction, my name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my right is Jordan Sendit, who's the sheriff of the BCSO department. To his right is Rex Davis, who's the game warden of the SASPR department. We'll be taking our interview for today. And we might have the SASP chief joining us as well, whose name is Kevin Butler. जब तक मैं आपका एक रेज्यूमे देखता हूँ, can you tell me something जो आपके रेज्यूमे में नहीं है, something about yourself? So I haven't mentioned in my resume that मैंने actually एक cadet center join किया था when I was 16, and from there onwards I was under training for 2 years. Once I was 18, I was released as an officer in the department, and उसके बाद I worked there for 4 years till the rank of corporal, and then I moved. So I haven't mentioned that in my. Okay. Which was the last place you worked at? Yeah, I was a corporal Where? in Sanfier. Sorry, your voice cut for me. In Sanfier. Okay, alright. So tell me a regular day in your life, like what were your duties as a corporal? So I used to be at night shift. So during the day I used to just mostly sleep, but like normal night would be for me. First I would go to the department, like the police department. I would clock in for my work, check all the emails I received, and then go on for some patrolling. After that, as I was a corporal, like कोई cadets आते थे, so you know उनको थोड़ा introduction देता था about the department. I wasn't an FTO, तो field पे उनको कुछ नहीं सिखाता था, but you know just थोड़ा department में just showing around rooms का and used to do that, and patrolling करता था if there would be any situation and stuff, then go. Okay. आपने बोला FTO नहीं थे, any particular reason? Actually वहाँ पे requirement थी that you must work for like 5 years so you can become an FTO, and I was only released as an officer there for 4 years. 2 years में training में था, so I couldn't. Alright. You're aware for which department you're applying, right? Yes, sir. Which department? Applying for SASP. And what are the sub-departments under SASP? Like Los Santos Police Department, which is LSPD, then the Park Rangers Department comes in, and BCSO, and Highway Patrol. What's the full form of BCSO? Blaine County Sheriff. And if you were given an opportunity to be placed under one of them, what would be your preference? I don't have a specific preference actually, because everyone does the same job.
So according to you, the LSPD, SASPR, and BCS will do the same work. Yeah, more or less do the same. Then why not? Why have three departments? Why not just merge all three of them and just have one department that's functioning around the entire state of San Andreas? So that each department can focus on particular areas better. Okay. So according to you, the only difference between the departments is the working area, right? Not necessarily, but basically, yeah. They have their differences, but the basic is same. Okay. So that's why I'm asking. What are the differences? You said they have the differences, right? According to you, what are the differences? Like each of them have their different responsibilities according to like what type of crime happens in different areas. So yeah, that will be like they'll have different responsibilities. All right. Okay. How many years of experience do you have? So How many years of experience do you have? 2 years as a trainee, 4 years as an officer, and then I moved on to a corporal. Okay. You must be aware about the amendments, right? No, I'm not. Okay. Are you aware about case laws? No. Do you know what is code of conduct? Yeah. What is code of conduct? So like code of conduct is like basically like a set of rules or like your responsibilities, your duties that are told to you, so that it's like a basic structure of how things are supposed to work. Okay. During your time as a corporal when you were on duty, tell me two major incidents that have happened with you that have helped you learn a lot. So two major All right. situations that you feel you dealt with really well. Okay. So once there was a situation where one of our officers were taken a hostage inside the cells because he was a new officer and he had like forgotten to search the suspect, and the suspect ended up with a knife inside the cells with the officer. So over there, we had to, meet with the demands of the suspect. But eventually, after he was brought out of the PD, we had like officers set up on the rooftops of the nearby buildings. So, we could track him where he was going, and we were able to catch him later on. So I guess planning in which in the way we did that was kind of. Okay. Any more such incidents? Am I audible? Yeah, you're audible now. Yeah. Any more such incidents that have happened that have been a major learning curve in your duty? No, just like, well, a lot of more incidents have happened, but none of them were like, specifically gave me, some really good learnings other than this one. So you're seeing in 4 years of duty, only one incident has been a big impact to your life. Yes. Interesting. Okay. Send it text. I can ask. I'll come back later to ask. Corporal, right? Previous run. Yep. How many types of charges exist? There are 3 types of charges. One are like misdemeanors, one are traffic infractions, and I'm forgetting the type of charge the other one is. Which is like the most highest charge with the highest jail time and highest fine? So What are they those types of were charges called? right, yeah. So I don't really remember the name of those charges, but we used to like call them red charges, like informally amongst our department. So like those charges can consist of like terrorism and So stuff like that. any 3 or 4 charges which comes under red charges according to you? Terrorism, murder, murder of a government employee, and yeah, bomb threats, stuff like. So are these charges bailable? No, 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 they're not bailable Why so? because they are like way too major of crimes that have been committed by a person that they can be given a bail. So till the time they're not given a bench trial, they are supposed to be held at the cell. Sure. When does the bench trial takes place? As soon as possible, preferably the I mean, same day. on what But situation, on what basis?
Well, there are different reasons why a bench trial can take place, but if it's a red charge, then a bench trial is inevitable. Like the police, we cannot judge what sentence or fine we're supposed to give it to them. It's supposed to Difference be between a bench trial and a court case? a bench trial is basically where the judge straight away decides what is supposed to happen with the suspect, like decide his jail time and sentencing. And a court case can be like, it's a huge category. Anything like that can be a court case between two people as well, and in that the judge will decide who is right or who is wrong or who's supposed to get a sentencing or something. Who represents the PD at a court case or a bench trial? The district attorney. Acha. Like you have zero about idea about case laws? Like nothing? No, I have never heard of it. Okay. Let's just assume that you are instated as an officer into the PD. Okay? Yep. You got a call of a house robbery. You arrive on scene. You see that the main door is shattered. It was a glass door and it is shattered and there is blood splatters everywhere. The window or the door? You see the door right behind you. Okay, got it. Exact same door. And the glasses are shattered and there are blood splatters. And the very next moment, you see a guy like limping across the street with his knee bleeding. There is a bruise on his knee. What will be your first instinct as an officer? So instinctively, the first thing I would call for is medical backup and police backup on the radio. 4 to And 4 to then 1 I over would 120. have my weapon in my hand while I approach the person who's limping, because either he can be the person who was Not trying to audible, Jake. enter. You are not 10 to. Am I audible? M1 Check. taking interviews. Sorry. Go. So either that person can be the person who was trying to break in, so I'm not aware of that, or Mute he है मैं can खाना खा रहा be हूँ. like a civilian who was injured by the burglar or something. I never know who that person might be. So just for my safety, I'll have my weapon in my hand, but I'll approach him and I'll ask him for medical help. I'll treat him with first aid if I can and if it's available with me, and I'll take him to the hospital straight away. But he will be under observance and he will be detained until we can prove that he's not guilty. Suppose he interrogated him thoroughly while him being detained, and it comes out that he was a suspect. Okay? He was a suspect, and you took the blood sample from the crime scene. And now the very next moment you do is you go to the suspect and you ask him you ask him to undergo a DNA test. You ask for his DNA, and the suspect, like being worried, he refuses to give his DNA. To whom will you contact next? I will ask him if he wants a lawyer, and if he does, then we'll ask for his lawyer, or I'll contact the district attorney to ask him what next actions we can take according to the. Okay. What are the Miranda rights? You want me to You have read them the to you? I can tell you read that. me. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, then the state will provide you with one if available. And that's the rights. And then you're supposed to ask the suspect if they understand them. Just let me just one second. Just one thing I want to ask in the middle. Huh. Suppose a person commits as big of a crime as robbing a bank. Okay, you chase him down, you catch him, you bring him to the cells. After that, in the cells, you confiscate his items and you read out to him his charges. You tell him his jail time, you tell him his fine amount. You are about to jail him, and then you remember that you haven't told him his Miranda rights. What do you do next? I'll read them out to him at that point, and just for confirmation on what I can do next, I'll contact the DA as well. But just rest be assured that this will never happen. Not about In never happen. I'm case- saying if it happens, then what? Yeah, if it happens, then I'll read that out to him anyways before sentencing him, and I won't take him to the jail. I'll just contact the DA and ask him what I should do.
Okay, so we continue. Which amendment will get violated if you don't read the suspect's rights? I'm not sure about the amendment. Which amendments? How many types of warrants exist? There are like 5 types of warrant. What are those? First is a bolo, then search warrant, arrest warrant, raid warrant, and a vehicle search. And a kill on site as well. Sorry, so 6 warrants. Okay. You being a corporal, how many warrants have you took out? I've taken out multiple vehicle seizure warrants and a few arrest warrants. There was never a kill on site warrant during my time. On what basis did you pull out those vehicle seizure warrants? On the basis that we spotted My the vehicle impression. multiple times at places where crimes were taken, and we had enough evidence for that, so we were allowed to seize the vehicle for 7 to 30 days. Who approves those warrants? The DA. That's the maximum time of a vehicle being seized? 30. 30 days. And for the same reason, like you were racing and stuff. Yeah, if there's a particular reason, then you can seize that vehicle for a minimum of 7 and a maximum of 30 days. Minimum of 7. And what was another warrant you took out? Except from vehicle seizure? Yeah, I mean, I didn't personally take out any warrants, but search warrants, arrest warrants, all were there. There were no kill on site warrants. So you don't know about amendments, case laws, and only can get 2-3 warrants left. So what have you done as a corporate? How can you prove yourself as a corporate? What achievements do you have? I generally used to be on the night patrol, as I said. So during the night, there were more of like traffic infractions which I used to deal with, and other cases like managing people who were drunk and loitering around, and robberies here and there, and that sort of stuff. You started as a cadet. Yeah, I was in a cadet program, so I started as a cadet while I was 16, and I was studying there as well. So as soon as I completed my education alongside my training at 18, I was released as well. What all did you learn in your training phase? So there were like 5 to 6 like bases which they used to say, like B1, B2, B3, B4, B5. So there was like a lot of stuff, from the basics. We were taught how to use an MDT, how an MDT works, how the police department works, how to do a traffic stop, and everything from the basics. And there were A1s and A2s, which were basically about the law, like which you have been asking me all this time, like about what's it called, How many amendments and stuff. MDTs have you created? Like approximate? Like 100 at least. What is the format of an MDT? So you write the name, at the title, you give the name, you give the date, and then the biggest or like the heaviest charge which they have done, you mention that. Then you're supposed to write basically like a summary or a synopsis of what incident happened. Then you write the officers involved, the name of the suspect, the items you've taken, the items you're supposed to return, and if the suspect pleads guilty or not. And what about the charges? I didn't understand. Don't you mention the charges in the debrief as well? Yeah, you mentioned the charges not in the MDT, but like in the UI, mention it over there. You're not supposed to mention it in the text which you write. What skills do you have? Like, do you know to fly an air one or know to ride a bike? Are you better at driving a car? I can ride a bike. That's Ride a bike. basically my, yeah. And except from that, what skills can you bring into our department to enhance our law Well, enforcement? so usually
what I have observed and what other officers have told me is that I'm able to negotiate very well with suspects because I can get an emotional touch with them. I don't know how true that is, but yeah, that's something that I've been told a lot. What are negotiable items and non-negotiable items with examples? So negotiable items are like items which a suspect or a criminal can demand for in exchange for hostages or other liabilities. And non-negotiable items are items which we're not supposed to give them, no matter the case. Some example of negotiable items are like food, water, medicine, clothes, and stuff like that. Non-negotiables are like weapons or another hostage in exchange and stuff like that. What if Ammunition. the robbers demand for a police interceptor? We can provide it to them, considering that they have been you know uh what's it called? They've been complying with us so far. They're agreeing to our demands and they're talking properly. And if we feel like they won't uh just make a mess, then we can give it. What if they demand for $100K in cash? No, we cannot provide. You cannot. No. Okay, I have one question in this part. Do you know any exception situation where you can do a hostage exchange? Yes, if it's a minor, if the hostage is a minor, then we can, or if the hostage is like say pregnant or something, then we can, or if they're medically unwell. Okay. Alright, so your resume states that you had got like a certificate which is approved for pursuits, right? Right. Was that like what transport? Was it a bike? Was it a car? Was it a what? Like It was a bike. It was a bike. it was a bike. Okay. Uh, think about this way: you end up at a location. You spot 12 bikes. All of them are super bikes. You're on a bike unit. You realize that it's a race happening. How do you approach the situation? How do you if you have to capture a suspect? How do you capture him? What do you do? It's an illegal bike race you spotted. What exactly do you do to manage the situation? So, do I have available backup on the radio, Yes, you or is do. it just? All right. So first of all, I would make sure I'm not in the sight of the racers, because if I'm in their sight and I'm alone over there, they it might aggravate them. So I would try Dispatch to avoid officer that Bay and responding get out of their way, out of their sight, and I on would to call the for case. backup firstly, On and I radio would frequency mention it in 3 the radio that we're not for supposed to be office exam. spotted because we don't want to aggravate the situation. And after I call for some additional bike units, we'll approach them. If they start evading, then we'll only focus one of the suspects and try to catch them, rather than trying to catch all of them and get Okay. What are the different type of evidences you can obtain from a scene? I'm not sure about this question, but I guess like you can take photo evidences, you can take you can take photo evidences, you can get audio recordings of the suspects talking about something. You can get their vehicle number plates, stuff like that. Okay. To achieve your proof of pursuit certification on a bike, what all did you have to do? So there was a small written exam, which was just basics about the bikes and stuff. Then the instructor of the bike, he just had a pep talk with all of us, and he wanted to understand why we wanted to join the bike unit. Then we had a small pursuit where we would go at a particular location, and there was a track which we had to follow. And after we complete all three of these, we would have to try to catch the instructor on his motorcycle, of course away from civilians and away from where people can be. And if you are able to do all of that, then you used to get your. Okay. There are a lot of other experienced officers like yourself who've come for these interviews, who we've been talking to since morning. What makes you better than them? I'm not gonna say it makes me better than them because I haven't met them, but the qualities I can bring onto the team is like, first, as I said, my negotiation skills are really good. I can get an emotional connect with them.
And one thing I've understood is that sometimes when the department is demotivated, there always needs to be one person who like cheers them up and leads them up. So that's another one of my qualities as well, which I can do, and that happens a lot in our job. So I think that will be a really good quality I can bring on the team. All right. Okay. I have no more questions. I mean, if anyone has, they can ask. Rex. No. I'm done. Ron, do you want to say anything? Mm-hmm. All right. That's all for your interview. We'll let you know in due time about your response. All right, thank you so much, sir. Yep. And by this, sir, what's your good name? I didn't. It's Senior Officer FT Rane once. All right. Thank you so much. Thank you so much, officer. Have a Yeah. great. Thank you. Have a good day. ये सही था. Yep. Yeah, come in. सिर्फ वो इंटरसेप्टेड वाला. हाँ. सर एक्चुअली आज मेरा ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम था, सो अगर कोई एफटीओ या कोई हाई कमांड अवेलेबल हो तो लाइक एक से दो इंटरव्यूज के बाद आई थिंक सोलो कैडेट एग्जाम भी हम लोग ले सकते हैं, राइट? Yep. हाँ, तब तक you can continue the code with. We'll let you know on the radio कि we are like ready to take Excuse the me. exam. Sorry to interrupt, but the door is locked. I'll help you out. I'm going. Okay. Sir. Yeah. कितने हैं ऑफिसर एग्जाम्स के लिए? बहुत लोगों को बुलाया था, लेकिन मैं देखता नेक्स्ट कैंडिडेट दिखता कोई है. हाँ. कहाँ है? मैं देख के आता हूँ फिर. वही नीचे है रिसेप्शन क्या? पे ही होएगा. हॉल अगर में होएगा तो रुक जा मैं देख के आता हूँ. रुक जा देख. अपने भी रिव्यूज लिख लेना, नहीं तो बाद में बस +1 लिखोगे सारे लोग. वैसे ट्विटर देखा सेंडेड? क्या? ट्विटर नहीं. कितना प्यारा सा फोटो लगा यार. Photo 11. There's no one waiting for an interview. Hey, from just one sec, wait. Want to start for exams? चलो. All right, then we can I think move on to the exams. Stand for. Let the officer know. Yeah. Also, should ready want to inform. हमने टैग किया था ना किसका है आज? Rex? हमने हाँ. Zero paper back on frequency 1. Want to dispatch all solo cadets that were called for an officer exam for today. The exams will be commencing now, so 7619. Yeah, coming. Alright, can you introduce yourself once? Yes, With sir, your this call is- sign. I'm not assigned my call sign yet, sir. मुझे call sign यहाँ मिला नहीं है अभी तक. Alright, ठीक है. Got it. So introduce yourself. Yeah, so my name is Abhishek from BCSO department. I just appointed as an solo cadet. So can I leave the radio? Yeah, sure. Yeah. Officer, leaving the radio for examination. I'm so sorry for that. No worries. Yes, sir. So, yeah, I had worked in NIA, which is stands for National Intelligence Agency, from India, obviously. Yeah, so that's it from my side, sir.
That's it for now. Okay. I assume you have studied your SAPs and everything, right? Yeah. Are you aware about the amendments in our constitution? I know few amendments. So Can you tell me any three? Amendment Direct to 1 101. says that. One sec, hold on. Send it. I will be there after the situation. The situation will be over. I will be there. After 10 for no worries. Yeah, continue. Yeah, so Amendment 1 says Switching to that Radio 1. each and every citizen of Los Santos has a right, like, to carry a weapon license. I mean, obviously a licensed weapon. Mm-hmm. But like, if they do any illegal stuff, then their license will be revoked. And the second amendment says that, like, I guess I just messed some of them. No, I mean, you can say any three. I'm not asking you in order. Any three in your mind. If you don't have, you can just say you don't remember. It's fine. I remember, but like as of the moment I थोड़ा सा हो रहा है. और एक amendment 4th कहता है कि each and every citizen has a right that no LEO or an officer can search their property or search them without any warrant or license. And एक amendment और है सर जो कहता है कि without a proper reason we cannot pull over or we cannot perform a traffic stop for any civilian. Okay. You said traffic stop. मुझे एक think of it right now कि you are pulling me over for overspeeding. Mm-hmm. Think of us right now in on field. Alright, sir. Perform a traffic stop on me. You have to give. Don't use the radio, but you have to give your radio calls. You have think of it that you are the driver of the vehicle. You are also the passenger of the vehicle, of your vehicle. Okay. Alright. So it is you plus one, but both of them are you. You have to do the duties of both the officers. Alright. Okay. So perform a traffic stop on me. Alright. One sec. Hold on. Hello. ऑफिसर एग्जाम में थोड़ा चलते चलते भी ऑन फीड भी लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, रूम में बंद बंद से अच्छा. अभी नहीं, वो नेक्स्ट वाले से What do you say? अभी ऑलरेडी हो गया तो नेक्स्ट वाले से करते हैं फिर. अरे नहीं, इसको फिर ले भी जाएंगे ना, लाइक व्हीकल Actually, fair टेक enough, आउट fair करना. enough. चलो हाँ ठीक है. Fair. या राइट. Yeah, सो fair. काइंडा. कौन सा व्हीकल? Actually, एक काम करो. Just meet me in the garage. Yeah, let's go. We'll take interview on field. Yeah. In garage? Yeah, come to the lower garage. Yeah. On field लेंगे. Alright. Alright, sir. Send it. हाँ, on field ले लेंगे. As you remember, I'll be asking the questions also. रेडियो डिस्ट्रैक्शंस होंगे उसमें, पता है? नहीं, we won't be on that radio. No worry. SOPs में पूछ लूँगा, ठीक है? First basics. I have few questions lined up. ठीक है. इस situational और deep में jump in कर जाना. Okay. 101 direct to Rex and send it. ये कैसे मरा अभी? Can someone look at the 14? Just wait here only. 14 has been set. एक फोन. यहाँ कोई जॉब नहीं देता रेडियो पर. I'm on radio 3. I'm not on radio 1. ये प्राइमरी रेडियो नहीं है.
अब कैसे डाउन हो गया? मे भी खाना पीना। ऐसे लोग भाई दिखते नहीं है खा पी रहे कि नहीं। भाई कितना डाउन भाई। अब तो पता है 10-14 का कॉल आता है ना, एज्यूम कर ले तो एक तो या फिर एक्स होगा और कोई नहीं हो अरे सकता। इन दोनों में से कोई होगा। गाड़ी फूट रहा है, एक्स डाउन। गाड़ी से उड़ गया है, एक्स डाउन। खाना पीना नहीं खाया, एक्स डाउन। डार्क ब्लू एंड लिवरी। इधर एक सुअर मरा पड़ा है, इसे बचा लो। कॉरियर डाउन हो गया है, चलो। हैं? 911 आया ना, इधर एक सुअर मरा पड़ा है, उसे बचा लो। ऐसा लग रहा है एक दिन तू गाली खाएगा। आओ बैठो। May I join you, Yeah. sir? Yep, yep. Four to send it your 20. Answer. Officer, we're performing code 1+2. Come to radio 3. So radio 3 only. Yep. 10-4. Ron, you can start off by the way. Huh? Yep. So you know the SOP, right? Yeah, yes, sir. Okay, so let's start with what is an SOP and let me know the full Just form a of minute, sir. Just a minute, sir. Actually, थोड़ा सा ज़्यादा sound है. गाड़ी का ना, हाँ. Yeah, perfect. हाँ. So what is an SOP and what's the full form of SOP? SOP stands for Standard Operating Procedure. Like इसके अंदर in short अगर मैं बताऊँ तो जो ऑफिसर्स होते हैं एक कायदे कानून से चलते हैं, ना कि किसी भी रैंडम गुंडे या मवाली की तरह या किसी गैंगस्टर की तरह पेश नहीं आते हैं। उनको अपने लाइक तरीके से चलना चाहिए, जो भी उनका प्रोसीजर है काम करने का। जैसे कि अगर किसी को हमने अरेस्ट किया है तो उसको प्रॉपर राइट होगा, उसको सुनाएंगे, उनको प्रॉपर उनका जो भी लॉयर हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो हम उनको कोर्ट की तरफ से जो टीए अवेलेबल होगा वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। और इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है सर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ठीक है। जो ये राइट्स कहा, तो व्हाट इज द राइट? लाइक मिरिंडा राइट होते हैं, जो जिसके अंदर लाइक हम उनको बताते हैं कि उनको शांत रहने का पूरा अधिकार है। जिसके अंदर ये होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं हमारे सामने, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ वो स्टेटमेंट अपने लॉयर के सामने दे, लॉयर के सामने बात करें, तो उनको उस चीज़ का पूरा अधिकार है। तो वो चीज़ होता है कि राइट टू रिमेन साइलेंस, मतलब उनका जो राइट है सर वो होती हैं। पूरा एक बार रीड आउट करो और पूरा एक बार समझा दो मेरे अंडर राइट्स। आई गॉट द फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट समझा दो उसके बाद से। You have right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have right for your attorney. If you cannot afford one, one will be provided by the state if available. Do you understand your rights as I have read them for you? और इसका मतलब ये होता है, पहला पार्ट तो मैंने बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई भी सस्पेक्ट को हम पकड़ते हैं कोई भी गैर कानूनी काम करते हुए, तो उस केस में अगर वो सामने वाला गिल्टी नहीं करता है, प्लेज नहीं करता है, तो उस केस में हम उनको लॉयर प्रोवाइड कर सकते हैं या वो खुद लॉयर लेकर के आ सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं तो लाइक हम उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि वो कोई स्टेटमेंट दें, बट अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उनके स्टेटमेंट को हम कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो ये है राइट। सो उनका मतलब मिरिंडा राइट का मतलब है। ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ चेन ऑफ कमांड and is it a one way or a two way protocol? All these three different questions, okay?
what is chain of command? Give an example of chain of command. And is it a one-way or a two-way protocol? चेन ऑफ कमांड जो होता है वो SOP के अंडर ही आता है, जिसका मतलब होता है कि अगर मुझे अपनी कोई बात पहुंचानी है, लाइक दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे कोई बात लाइक 101 तक पहुंचानी है, सर तक पहुंचानी है, जेक सर तक, तो मैं डायरेक्ट जेक सर को कांटेक्ट नहीं करूँगा। मैं सोलो कैडेट हूँ, तो मैं अपने किसी ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर को कांटेक्ट करूँगा एंड उनको मैसेज दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैसेज जो है या जो भी चीज़ है वो सर तक कन्वे कर दी जाए। सो दिस इज़ द चेन ऑफ कमांड, और इसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपने तीसरा क्वेश्चन पूछा था सर, कैन यू रिपीट अगेन? Is it a one-way protocol or a two-way protocol? इट डिपेंड्स सर एक्चुअली। वैसे तो ये वन वे प्रोटोकॉल है, बट लाइक कुछ केसेस में ये वन वे प्रोटोकॉल लाइक अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बैंक रॉबरी हिट हुआ है या ऐसा कुछ सीरियस सिचुएशन हिट हुई है जहाँ पे किसी जूनियर ने पहले रिस्पॉन्ड किया है, सो उसको ज़्यादा पता है किसी सीनियर से। So it's not that question. I'm telling कि does it go from downwards to upwards? ये one way है or is it a two way? It comes from upwards to downwards too. The chain of command. Like you said, right? Got it. I got it. Yeah. I got it. So उस केस में yeah, it's a two-way command है. Hello. I'm what is chain roaming of command? around with the solo cadet and Ron, where you all pick up. मैं बैक साइड में लाइक कमांड देना कि लाइक अगर मैं कोई सीनियर ऑफिसर हूँ, तो अगर मुझे कोई ऊपर से कमांड आती है तो लाइक मैं वो चाहूँगा कि वो फॉलो अप हो एंड मैं उसके ऊपर ध्यान रखूँगा और मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको मैं बताऊँगा कि ये काम करना है एंड उनके साथ मिल करके वो काम करूँगा। या सो और अगर मुझे कोई अपनी चीज़ को ऊपर तक पहुँचाना है, किसी हाई कमांड तक पहुँचाना है, तो मैं डायरेक्ट उनसे नहीं जाऊँगा, मैं सीधा पहले ऑफिसर फिर सीनियर ऑफिसर। अगर वो सुनते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, तो बैठ जा। उसके बाद सेंड इट, बैठ जा, सेंड इट बैठो, कोई ना। हाँ, तो next is what is match of force and why do we apply match of force? And give two examples of match of force. ठीक है? Okay. What is match of force? Why do we use match of force? Give me two examples of match of force. ठीक है? ठीक है। या सो मैच ऑफ फोर्स जो है सर वो कंसिडर की जाती है कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं, लाइक जो भी सस्पेक्ट है या जो भी सिविलियन है, वो किस तरीके से हमसे बिहेव कर रहा है। अगर वो सामने वाला लाइक बातचीत कर रहा है, बातचीत करके बात कर रहा है, तो थोड़ा हम भी उससे बातचीत करेंगे। लाइक ये होती है मैच ऑफ फोर्स, होती है 5 तरीके की। पहली होती है वोकल। The question is what is match of force? हाँ, मैं not force of escalation. ओह ओके, सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। सो मैच ऑफ फोर्स ये होती है सर कि लाइक अगर सामने अगर कोई लाइक फॉर एन एग्जांपल सामने अगर रॉबर्स की तादाद ज़्यादा है, या फिर आई मीन रॉबर्स नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि सस्पेक्ट्स उनकी तादाद ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है नंबर्स में वो, और हम लाइक ऑफिसर्स कम हैं, 1-2 ऑफिसर्स हैं ऑन ड्यूटी। सो जस्ट बिकॉज उनकी फायर पावर को मैच करने के लिए, लाइक अगर वो अग्रेसिव हैं तो उनकी फायर पावर को मैच करने के लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको लाइक वो अपने वेपन्स को लाइक एनहेंस कर सकते हैं, अपने फायर आर्म्स को एनहेंस कर सकते हैं, लाइक क्लास 1 से क्लास 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो होता है मैच ऑफ फोर्स, ताकि ठीक है सर, आई डोंट नो, बम्प था, गड्ढा है यहाँ पे।
गड्ढा है यहाँ पे। जमीन में गड्ढा है या अच्छा ये देखो ये यार ये सिटी हॉल वाले ना ये आदि श्रीवास्तव काम नहीं करते छी। बताओ आगे बताओ। Yeah. Give me 2 examples and also Yeah. why do we need match of force? मैच ऑफ फोर्स का होना ज़रूरी है सर, क्योंकि कैजुअलिटी ना हो ज़्यादा, इसलिए और एग्जांपल्स तो सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट या स्टेट लाइक डेफिनेशन इसका यही है, और बट एग्जांपल्स अभी के लिए मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है सर। सो ठीक है। Now let me know the difference between a traffic stop and a felony stop. And do you only conduct a felony stop during the vehicle felony or the person committed, or there are any exceptions in that? सर लास्ट वाला पार्ट फिर से रिपीट करना। ठीक है मैं कर दूंगा। Just tell me the difference between a traffic stop and a felony stop. अरे ट्रैफिक स्टॉप और फेलिनी स्टॉप में दो डिफरेंस होता है। नंबर पहला, ट्रैफिक स्टॉप जो होता है वो नॉर्मल क्राइम्स में यूज़ किया जाता है, लाइक ओवर स्पीडिंग, लाइट ट्रैफिक लाइट जंप्स, और ऐसे छोटे मोटे केसेस में किया जाता है। और फेलिनी स्टॉप जो होता है वो हाई प्रोफाइल केसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति का एक्सप्लेन करना रुक जाओ। Will perform a traffic stop, you go, you give the call and perform a traffic stop on this garbage trash master. Okay? नहीं अभी वो जो भी चला रहा एक बार बस कूद लो। अंडरस्टैंड द इमरजेंसी, बार कूद लो पर। यस 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 ब्रदर। द इमरजेंसी। हाँ वो बंदा डाउन है, डाउन लटका हुआ है। कहाँ डाउन है? लटका हुआ है डाउन। अरे लटका हुआ है ब्रो। डाउन हुआ है पीछे। डाउन है डाउन। देख राइट वाला। ओह माय गॉड। देखो पीछे। Yeah, should I go for No, that? no, no. Explain the felony stop. Yeah. So felony stop ये होता है लाइक उसके अंदर हाई प्रोफाइल केसेस होती हैं, मतलब लाइक गाड़ी या कोई व्यक्ति जिस पे वारंट है या बोलो निकला हुआ है, उसके ऊपर हम फेलिनी स्टॉप परफॉर्म करते हैं। फेलिनी स्टॉप जो होती हैं यूजुअली लाइक हिट एंड रन, चोरी की गाड़ियाँ, या फिर रॉबरी, या फिर कोई मर्डर केसेस। Hold on one second, joining radio one second. He had some issues. किसको बुला रहा है? Who is calling me? Radio 3 पे आ। Radio 3 पे ही हूँ मैं। तुम डाउन हुए थे, रेडियो डीसी हो गया होगा। या फिर रेडियो 1 पे है। हाँ रेडियो 3 हाँ। What is officer exam going on? 10 the officer exam is going on currently. Wait at 19. Yeah, बताओ। कंटिन्यू। अच्छा मैं अभी समझा ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गाड़ी की आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी। बहुत ज्यादा है गाड़ी की आवाज। अरे नहीं मेरे लिए ज्यादा थी क्योंकि 8 पे थी ना दोस्त। मैं 1 कर। मैं तो 1 पे ही रखता हूं। 8 पे था, मेरा 25 पे था। मैंने कल किसी को गाड़ियाँ दिखा रहा था ना उस समय से। अच्छा हाँ। कोई ना, तुम ये बताओ कि फेलिनी स्टॉप जहाँ पे थे हम। या मैंने बताया जैसे कि फेलिनी स्टॉप जो होते हैं हाई प्रोफाइल केसेस पे किए जाते हैं, वारंट या फिर उन गाड़ी या व्यक्ति पे जिस पे वारंट या बोलो निकला होता है। And you also said stolen vehicles, right? So do you consider a bolo and a stolen vehicle a high profile case? Not a high profile case, but like कुछ केसेस में हो सकती हैं, क्योंकि जैसे कि कोई मर्डर करके भागा हो उस गाड़ी में चोरी करके, या रॉबरी किसी ने अटेम्प्ट की हो उस गाड़ी को चोरी करके। सो इन दिस वे थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। सो लाइक दैट कंसिडर कर सकते हैं इसको एज अ हाई प्रोफाइल केसेस इन सम केसेस, नॉट सेइंग कि एवरीवन, बट लाइक इन सम केसेस। फेलिनी स्टॉप के लिए Can someone provide me some cash? बैंक से भी हो सकता है। बैंक से भी तो कटता है। Yeah, but cash is convenient.
ये क्या बात हुई? टैक्स बचाने के लिए बैंक से नहीं पे करोगे? सो सॉरी सर, अभी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया था, आप एक बार रिपीट कर देंगे? How do we perform a felony stop? या सो फेलिनी स्टॉप परफॉर्म करने के लिए 3 यूनिट होनी चाहिए एंड एक चॉपर होना चाहिए, सो दैट अगर वो भागे तो एयर वन जो है उस पर लाइक नज़र रख सके। और एयर वन लाइक जब ट्रैफिक स्टॉप परफॉर्म होता है तो उस केस में जब तीनों गाड़ियां जो हैं लाइक पीछे की साइड पे फेस करती हैं उस सस्पेक्ट की व्हीकल को और रुकती है, एंड उसके बाद किसी जो कमांड होता है उसके कमांड पे लाइक कोई भी हो सकता है जिसने उसे कॉल दिया कि ये केस है, सो उस केस में जो कमांड है वो एक्शन ले सकता है, एक्शन लेगा कि कॉम्स देगा कि कब बाहर आना है और उसके कॉल पे हमें बाहर आना है, और लाइक टेजर गन्स पॉइंट करके जो गाड़ी के अंदर सस्पेक्ट्स हैं उनको एक करके उनको बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा, एक को फिर उसके बाद डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा, डिपेंड करेगा कि सस्पेक्ट का कंडीशन क्या है। Okay, so you said Pull over air to your one. right. So what do you mean by air one? Hold on. एयर वन जो चॉपर यूनिट्स हो। अरे वो छोड़ के चली गई तो थोड़ा गम में आ गया। थोड़ा राइट पे पुल ओवर कर लो। जाओ। Should I? Yes, this is you you will have give to the execute the full thing. Dispatch officer performing a 1011 on a garbage truck, 4 occupant, requesting one additional. Okay, 10 disregard, no need of additionals. Thank you. Just for this situation, otherwise your call for additionals is correct, okay? Just for now. Right. The call was incomplete. पता। Hello sir, Also, do you? Okay. Rex अपना नंबर देना। Rex. You must be thinking something. नहीं हाँ बोलो। नंबर दो। किस लिए? वो ना 410 पे। थोड़ा सा स्लो है, ठीक है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं? This Bengali is not irritate me a lot. अच्छा। So you are supposed to carry your driving license all the time, you know? मेरी Sir, do one thing then. In this case, won't we allow you to drive your vehicle without a driving license? That's fine, but you are not supposed to drive this vehicle. आज पता है वैसे जी अगाई और रुक जाओ सुन लेते हैं। And can you show me your ID card? You are driving your vehicle without your ID card and without your driving license as well. Hi sir, can you just tell me your name? क्या नाम था आपका? रैन विल्सन। स्पेल आउट। लैंस विल्सन, राइट। आपकी गाड़ी की आपके पास कौन सी गाड़ी है? कैन यू टेल मी वो GTR नंबर प्लेट? आपका नंबर प्लेट होगा ना? सर कंफर्म हो गया कि आप ही हैं ये आईडी का ऑनर, ठीक है?
As of for now, I am charging you for driving without your driver license. Alright. So sorry sir, आपको already कई बार multiple warnings दे चुकी हैं, मिल चुकी हैं. Okay. Driving आप कर रहे थे, right? So Eh? can you just tell me appellate sir? और उसको बता देना कि क्या सही किया क्या गलत किया, आई मीन नॉट क्या सही किया क्या गलत किया. Yes sir, I'm going to ticket you for $850. Alright. Yeah. You were overspeeding and you broke a pole as well, and you are driving without a driver license, and neither you are carrying your ID cards. So yeah. आपको बिल आ गया होगा सर. राइट. सर प्लीज़ आप गाड़ी से उतर जाइए, प्लीज़ आप कोई और चलाइए. राइट. एंड जो चलाएगा सर एक बार मुझे इसका ID कार्ड और ड्राइवर ओए लाइसेंस है किसी को तुम में से कि नहीं? आप ये मत बोलना तुम भी किसी पे रील लग गया बच गए. थिंक अबाउट सीट वन. ये अच्छा था. क्या क्या दिखे थे बताओ. एक तो लोकेशन कॉल पे नहीं थी, दूसरी ट्रक ऑन थी पूरी ट्रैफिक स्टॉप में. यप, यही दो चीज़. एंड आई मीन ट्रक है बट स्टिल नॉट 28 ना was performed. I know it's a truck but like I guess on normal vehicle पे बोल देता. मुझे नहीं आया. But yeah. ऊपर बैठे हैं तो आप एक बार नीचे आकर के दिखा दीजिए. ठीक है बट मैच ऑफ फोर्स वाला आंसर. Yep. This is officer Abhishek. Alright ma'am, पीछे की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी ना तो आप जा सकते हैं. वाह हैं? वाह. बाय द वे तुम लोग गार्बेज ही कर रहे हो ना? फैशन शो में तो नहीं जा रहे? प्लीज हो गई तो मैं बताता हूँ अभी ठीक हो जाओगे. वाह. कोड 4 का कॉल दो. Last 2011 is not code 4. ठीक है. सो क्या मिस्टेक किया था तुम्हें पता है? कैसा? क्या मिस्टेक किया था? मैंने दो कॉल माइनर साइन मिस्टेक. कॉल साइन नहीं दिया मैंने क्योंकि वो साइन नहीं हुआ है. नहीं. अपना डिपार्टमेंट का नाम तो मैंने बता दिया था. वो भी नहीं. सो सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा. फर्स्ट 10-11 कॉल में लोकेशन मेंशन किए थे. या थोड़ा सा नर्वस हो गया था तो थोड़ा दिमाग से उतर गया था. पूरा ट्रैफिक स्टॉप में ट्रक ऑन था. ट्रक ऑन रहती है या फिर कोई भी व्हीकल ऑन रहती है? नहीं. फिर एक्चुअली हाँ थोड़ा वो नर्वस था तो शायद उस वजह से हो गया. ठीक है. ओके देन. कहाँ पे थे? फेलिनी स्टॉप पे थे ना? तो फिलहाल एयर में थे. तुमने यूज किया था टर्म एयर 1 राइट? या. So what do you mean by Air 1 and why is it just only Air 1 and not Air 2, Air 3, Air 4, Air 4, Air 5 etc? सर एयर 1 इसलिए होता है क्योंकि लाइक हम फॉर बेटर विजुअल्स समटाइम हमारे पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं
लाइक जो स्पीड यूनिट नहीं होती है, सो उस केस में अगर कोई एयर 1 लाइसेंस वाला कोई I कोई mean, ऑफिसर है। you mentioned Air 1 specifically. Why is it not Air 2, Air 3, Air 4, Air 5, etc.? क्योंकि सर एक सिचुएशन पे एक ही एयर 1 अलाउड होता है, सो इसलिए एयर 1। सो this is how I mentioned, that's why I mentioned air 1. Okay, so how many MDTs have you made? Actually, No, he's not. I didn't create it. That's fine. He's not made MDTs, but that you can avoid for this specific case. I'll tell you why later on. ठीक है. So then, but you must be aware of the charges, right? Infraction, misdemeanor, and felonies. Yeah, I am aware of. Yeah, just define these three and give one example each. Like all the three? All the three: infraction, misdemeanor, felony. Define them and one example each. Both are separate questions. Define and examples. Like, alright, I'm going to explain the infraction. Like ये छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, like ट्रैफिक लाइट जंप कर दिया, ओवर स्पीडिंग करना, ओके, एंड मिसडेमिनर में जो थोड़े इन्फ्रैक्शन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लाइक थोड़ा फेलनी से थोड़ा कम होता है, पर फेलनीज की कैटेगरी में नहीं आएंगे ये सारी चीज़ें, और छोटे मोटे मॉडरेटर फाइन्स लगेंगे, छोटे मोटे फाइन्स वगैरह लगेंगे, और जेल टाइम छोटी मोटी होंगी। और फेलनी के अंदर जो है, इसके अंदर ये मेजर क्राइम्स होती हैं, इसके अंदर फ़ाइन जो होते हैं वो बिल्कुल कम नहीं होते हैं, और जेल टाइम पे बिल्कुल कम नहीं होती है। और इसके अंदर बाकी की जो इन्फ्रैक्शन और मिसडेमिनर है, इनमें इन दोनों में सस्पेक्ट को लॉयर मिल जाता है, बट फेलनी के अंदर उनको बिल्कुल भी लॉयर प्रोवाइड नहीं होता है। फेलनी के अंदर लॉयर प्रोवाइड नहीं होता है? नहीं सर, फेलनीज के अंदर लॉयर प्रोवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, one example each. One example each, like infraction, for example, infraction में हो गया ट्रैफिक लाइट जंप्स हो गया, ओके, एंड फिर आपका charge. What is the charge? charges, like 3 examples, 3 charge. That's what I am saying. ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, और इसमें चार्ज लगेगा ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, और ओवर स्पीडिंग, उसका भी ओवर स्पीडिंग करके एक चार्ज होता है सर। और तीसरा एग्जांपल है सर इसका, कोई नहीं है, हो गया, जस्ट जंप टू द नेक्स्ट वन, मिसडेमिनर। 1 each बोला ना? ओके, सॉरी, मुझे लगा आप तीनों का तीन एग्जांपल पूछ रहे थे। वेल, मिसडेमिनर का हो जाएगा कि हिट एंड रन, ये एग्जांपल है, तो इसके अंदर भी चार्ज है हिट एंड रन का। और फेलनी के अंदर होते हैं सर थोड़े मेजर क्राइम, जैसे कि बैंक रॉबरी, हाउस रॉबरीज, सो, और ये सब इसका चार्ज लगता है बगलरी का। चार्जेस इनके इसमें लगेंगे, बगलरीज के लगेंगे, अटेम्प्टेड रॉबरीज के लगेंगे, और पोजेशन ऑफ इलीगल टूल्स, इलीगल आइटम्स, बिकॉज क्योंकि वो अगर हाउस रॉबरी या किसी का ताला तोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे नीड सम काइंड ऑफ टूल्स व्हिच इज इलीगल। व्हाट इज द चार्ज? पोजेशन ऑफ इलीगल टूल्स। ओके, ठीक है, आई एम डन फ्रॉम माय पार्ट। रेक्स, आई हैव अ क्वेश्चन आउट हियर। अगर किसी ने रॉबरी किया एंड यू कफ हिम, कफ के बाद क्या करोगे तुम, क्या बोलोगे उसको? राइट सुनाएंगे सर उनको। वो राइट्स के एंड में क्या होता है? What are the last 2 lines of the Miranda rights? एक बार बोल दो Miranda rights, एक बार बोल दो।
You have right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have right for your attorney and. Bus, that's the main line. You just said that for such crimes a lawyer won't be provided, and then you're telling him that he has a right to an attorney. Then फिर हम मिरांडा राइट्स क्यों बोलते हैं लोगों को? सर मिरांडा राइट्स इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि बाद में अगर वो कोर्ट में ये ना बोलें कि उनको मिरांडा राइट्स नहीं सुनाया गया था, सो इसलिए सुनाया जाता है मिरांडा राइट्स। द क्वेश्चन इज लाइक ये तो बात नहीं की ना कि कोर्ट में ये ना बोले कि सुनाया नहीं जाएगा, सो वी व्हाई इज इट कॉल्ड मिरांडा राइट्स? वी कैन जस्ट से ABCDEFGH। सर मैंने इसके बारे में एक बार पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं है, जो मुझे याद है इतना मैं बता देता हूँ कि मिरांडा राइट्स एक केस हुआ था जिसके अंदर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो पर्सन थी शायद जिनका नाम था मिरिंडा, सो उनको विदाउट राइट्स कोर्ट के अंदर पेश किया गया और सो कोर्ट ने जब उनसे पूछा तो उनको कोई किसी तरह का राइट नहीं दिया गया, नहीं बताया, उन्होंने बताया कि कोर्ट के अंदर उनको किसी ने राइट्स वगैरह नहीं सुनाए थे, कुछ नहीं बताया था। सो फिर उस पॉइंट के बाद से इस केस के बाद से ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट हो गया कि जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको मिरांडा राइट्स सुनाए जाएंगे। ये तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री हो गया, बट द क्वेश्चन जेक आस्क्ड वाज you told me that during a felony you can't provide a lawyer, but you are reading a right that he has the right to an attorney, then both are conflicting, right? Yes but felony के सर उस केस में मैंने पढ़ा है कि उसमें राइट्स प्रोवाइड नहीं होती हैं, या तो वो HUT का केस हो सकता, हाँ या आई एम सो सॉरी या वो HUT का केस है सर। फिर ओके सर, HUT के केस में लॉयर प्रोवाइड नहीं हो सकता, फेलोनी के केस में हो सकता है? सर हो सकते हैं, या अभी मैंने एक MDT देखा था सर पुराना, तो उसमें एक लॉयर प्रोवाइड हुआ था जिसके अंदर एक पब्लिक में किसी को चाकू मारने का ऐसा इंसिडेंट हुआ था और ओए हनकफ कर रो अनसीट करो कोई। जेक सर ऐसे भी डाउन ही होता ना अगर नहीं भी लेके आते तो। कंटिन्यू ठीक है, I got my answers. If you guys want to continue, you can. Rex, send it. हाँ क्या हुआ? Alright. If you guys wanna continue. Now send it. He was doing some other work on the side. Yeah. So what छोड़ो. I mean you have covered majority of the parts. I wanted to. Okay, can you tell me like अभी के लिए a lot of people are doing burglaries, right? So what is the breach in protocol? सर पहले वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे एंड कंफर्म करेंगे कि सस्पेक्ट वहाँ पे है या नहीं है, लाइक एविडेंसेस देखेंगे कि उनकी गाड़ी है कोई आसपास जो सस्पिशियस है या नहीं है, और उसके बाद चीज़ रेडियो पे कॉम्स दे देंगे और यूनिट और बैकअप यूनिट बुला लेंगे सो दैट कुछ मिस हैपनिंग ना हो, लाइक जो सस्पेक्ट है वो थोड़ा एग्रेसिव वे में ना जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और बैकअप बुला लेंगे। और फिर जब बैकअप आ जाएगा तो सर हम वॉइस कमांड से उनको वार्निंग देंगे कि आप सरेंडर कर दीजिए और अदरवाइज वी हैव टू ब्रीच इन, एंड 5 सेकेंड्स का हेड काउंट दे करके विल ब्रीच इन एंड विल proceed our further investigation or the job. All right, okay. Tell me one thing. Okay, ठीक है. I'm going to give you a situation. You're basically performing a normal duty. You get a 90 call. All right. You respond. Eventually, after all the processes and everything, एक chase चालू होता है. You are enough units in the chase. तुम लोग काफ़ी लोग हो और that's not an issue. अभी सीन ये है कि सामने वाला जो सस्पेक्ट है, he has
continue the chase for a very long time, and during that he's burnt out multiple vehicles, and now he's switching into his fourth vehicle. If this happens in a situation and you are in command, how will you escalate for us? Sir, I'll make sure कि bullets fire होकर के tire taste ना हो, but definitely I will go with for the tire taste. Tire taste? Yeah. Tire taste? I mean, tires को like pop His करने means के to लिए pop. मेरा कहने का मतलब With, हाँ. and how will you pop them? सर उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होता है. उस इक्विपमेंट का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, एक्चुअली थोड़ा नर्वस हूँ उसके लिए. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. उसको सर रोड्स पे लाइक डाल दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं. स्पाइक्स, या एग्जैक्टली. सो स्पाइक्स डाल दी जाती हैं, और वी ऑल नो स्पाइक्स कैसे काम करती हैं. और इस तरीके से हम उनको लाइक एस्केलेट करेंगे अपने फोर्सेस को कि लाइक उनको स्टॉप किया जाए. और अदरवाइज अगर वो फिर भी अगर आगे जाते हैं कुछ और व्हीकल चेंज करने के लिए, सो विल गो फॉर द टैकल. और अगर कोई हाई कमांड में होगा तो उसके कमांड पे चलेंगे. और अगर या दैट्स द थिंग. ओके, एक बार वहाँ ले लेना खाना पीने की जगह. हाँ. या पीडी वापस. हाँ, पीडी वापस ले जाओ, because then we can just end this. I'll just Yeah. one two question we can. Yeah. Okay. I'll give you one more situation. A person is a suspect. Okay. After a robbery, his vehicle is burnt out. He's on foot. वो on foot में he has gone on top of a building. वो building के edge पे है. और उससे चिल्ला के बोला, officer, if you come anywhere near me, I will jump. What will you do next? Sir, will hold our positions, क्योंकि हमें सस्पेक्ट को रोकना है. क्राइम रोकना हमारा काम है, ना कि उनको जान से मारना. सो वी एज एन कमांड आई वुड नेवर, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो सस्पेक्ट है उसकी जान जाए. बट एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा कि उसको हम लाइक लाइव बिल्कुल सही सलामत पकड़े भी, और उसको क्राइम करने से रोकें. और फिर उसके बाद सर अपना लाइक बैकअप बुला करके डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अरे 2-3 उनको लोग और रुके हैं इंटरव्यू के लिए. सेंड इट. डेफिनेटली उनको दो लोग इंटरव्यू रोक वाले करके ऑफिस कोशिश करेंगे कि पता नहीं. कोशिश करेंगे कि उनको सही सलामत पकड़ें. ठीक है. Okay. No more questions. We'll let you know about the further protocol. Okay. And just do one thing. Like I know we've spoken, so just ensure that in any situation, one situation today, you make an MDT. Okay. Just so there's an MDT on your record. Yep. That's I know you can make one. That's why I just disregarded it right now. But just make one because we need it for record. Yeah, perfect. Okay. All right, sir. अच्छे लग रहे हो अभी. अच्छे लग रहे हो. One more later on. Send it. FTOVC. And then? FTOVC. And बोल. देखो मुझे स्ट्रीम म्यूट करने दे एक सेकंड.
Changing frequency on 1. Okay. 424 to 101. Do you want to continue with normal interviews or You solo can, to officer? you can go ahead and take interviews on your own as well. It's fine. Need 1 or 2 officer with me. Yeah, I'll just get you 1 or 2 officers. Just divide among ourselves again and continue. और सर बाइक्स कहाँ से वहीं से निकलती है जहाँ पे है? 5 ओके। गई सारी बाइक्स फटी सब। क्या हो गया? अनाउंसमेंट जो होगा अनाउंसमेंट चेक कर देगा, ठीक है? उसके बाद ही तुम्हारा जो भी SOPs वगैरह तुम बना रहे हो, that you need to work on that and need to verify it through all the like present hikes. Go ahead. Yeah, meet me at the reception, please. समझ गया? समझ गया। कंफर्म करा लेता हूँ एक बार इन तीनों हाई कमांड्स को दिखा के। Chief sir. हाँ बोलो। हमें we have to divide ourselves among interviews as well as officer exams. So how do you want to get divided right now? I'll go with 1 officer exam. किसी एक को मेरे साथ आ जाओ। आओ जाओ। मैं केविन सर को लेके जाता हूँ, ऑफिसर एग्जाम्स लेता हूँ। आप कितने ऑफिसर एग्जाम्स हैं? एक या 2 ही है। अमायरा और दो है शायद से। अमायरा बाद में देगी बोली उसने। अमायरा बाद में दे। 10 o'clock तक दे सकते हैं। एक केविन सर का एग्जाम सस रुको, स्विच करते हैं थोड़ा। तूने फिर से अपना ब्लश लगा लिया? अरे नहीं ना, क्या कुछ भी। और टमाटो हो रहा है। केविन सर एक इंटरव्यू बाद आप आ जाना, ठीक है? भाई मैं क्या करूं यार, ऐसे वो अभी हमारा नहीं, मैं स्लॉट ये इधर जो बैठे हैं इतना इनोसेंट हूं मैं देखो। चलो तब तक इंटरव्यूज आप करते हैं हम लोग जल्दी से। विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स। इंटरव्यू बहुत मस्त डिजाइन मिला है, दोस्त भेज रहा हूं। कोई एक को तुम लोग बुला लो। यप आ जाओ। Follow us. Follow everyone actually. Ron actually तुम उसको लेके ऊपर जाओ, मैं इनका एक सेकंड, किनका अपन जेक विलियम्स। हाँ बहुत अच्छा डिजाइन मिला है। तो मैं काम कब चालू करूं वो बता। कर दो भेज रहा हूं लिंक। हाँ भेजो। छोटू बना लेना मेरे को। ओके कपड़ा मार दूंगा। वो उसके ऊपर है, हमें क्या, हम तो पकड़े जाएंगे हर दिन। चले जाएगा सब कुछ। रेकलेस वेडिंग नहीं, रेकलेस वेडिंग में नहीं। अरे हाँ, चार्ज भी है इसके लिए तो, है ना? है देखा था मैंने। क्या 3000? ओह माय गॉड। क्या 3000? चेक हाउ डू यू लाइक इट, रिप्लाई करो। हाँ सेंड इट। वही आई नो। Hello everyone. Hello, what's your name? My name is Kaushik Ahmed. Do you mind if you can share me some foods? I'm hungry. Yeah, sure. Thank you so much. No worries. Before we start this off, can you just share your resume and medical certification with any of us? Sure. Just give me some time. I need to fix up the food thing. Yeah, no worries. Take your time. Yep, chief. ठीक है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना। मैं जे कैन सेंड इट। हाँ
यार Send it to what is the name the register? Rex. Rex Davis. I'll send it to you later. All right. इसमें भी 3 मिनट कर दिया. Yes. अच्छा है ना? हाँ मुझे बढ़िया लगा. हाँ. The third page you need to write, okay? जो है ना पढ़े हुए उसको backspace करके according. वो वो मैं पूरा एक बार A to Z पढ़ने वाला हूँ. हाँ मैं third page के नीचे में designs कर रहा हूँ. I send it to you. All right. Can you tell me your name again? Hold on. Sorry, I've shared the file. Medical certificate. Kaushik, right? All right, I'll just introduce ourselves. My name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my right is Rex Davis, who is the game warden of the SASPR department. And to his right is Jordan Sendit, who is the sheriff of the BCSO department. We'll take your interview today. Hello. By the time we go through your resume, just can you tell us something about yourself that is not in your resume? Myself. I'm a calm, collective guy. 220. I like to do my own work. And the one thing I hate is blame someone else's fault to myself. That's the only thing I hate. He'll be on Radio 1 chasing a GTR. And, with the interview. He'll be I there have in few some experiences for myself in the previous counties. Okay. So I think I'm capable to do the job, but it's you three guys to decide. Okay. How much experience do you have? I was a lieutenant at the BCSO. Okay. Where did you do your duties before this? Mississippi department. All right. Okay. It says in your work experience that you were working as the SDSO under BCSO. Yes. Can you So Mississippi was the state department. Okay. BCSO is the a part of county department, like Blaine County Sheriff's Office. And in the Blaine County Sheriff's Office, there's two divisions. One is SDSO, another was PBSO. Can you tell me the full forms? Yes, SDSO is Senator Desert Police Sheriff's Office. Another one is Paleto Bay Sheriff's Office. Okay, interesting. Do you know which department you're applying for? I think I'm applying for BCSO. You're applying for BCSO? Yes. Okay, interesting. Do you know which department BCSO comes under? Can you ask the question again? BCSO comes under which department? SASP. They are applying for the SASP. Oh, all right. क्या आपको पता है SASP के under which are the sub departments? I did some work, like I talked to some people over there, so I get to know like 3 departments. Two is in front of me. I can say Park Rangers and BCSO. Another is I think LSPD. All right, and I assume that you already answered the question. But if you were given a choice of a department of your choice, you would choose BCSO, right? Yes, I would. All right. Okay. Do you know what case laws are? Yes. What are case laws? It's like a hearing of few cases between 2 or more people, and the honorable judge and the jury make a judgment for it, and that becomes the judgment becomes a case law. Oh, very bad. Okay. Do you know how many amendments are there in our constitution? I cannot say like fully confirmed, but I think there is 7 or 6. Can you tell me any two? Not specifically, because it's hard to remember the number and no, I'm saying any two. I'm not asking you to tell me the second amendment, first amendment, fifth amendment. Like what are they? I think fifth amendment. So it's hard for me to recall all the things, but I know in the basis of a example in the field, but I cannot recall it. Can you give me an example?
like there is Miranda rights, there is a Miranda rights for like civilians and criminals. There is like what do you say? Mm, their right to speak. I cannot recall furthermore. Sorry. Do you know what code of conduct is? Like a procedure to do work professionally. Okay. You have You have multiple certifications, right? A1, SWAT, FTO, K9. Correct? Did I lost you? Am I audible, hello? Yeah. Now you are. I'm saying you have multiple certifications, right? Like an A1, like a K9, a SWAT, you are an FTO, correct? Yes, that's correct. Okay. As a K9, what is your main job? As a K9 certified officer? So main job as in, can you specify more on that question? As a K9 of certified officer, like what were your responsibilities? क्या करना था तुम्हें? So K9 is a like non-lethal way to prevent crimes or catch criminals. So our main work was to like suppress people with less harm way with the K9. That was our main job. Is a K9 a Leo? Yes, it is. Okay, you are in the SWAT team as an operator, right? Yes, full-time operator. Can you tell me one of the missions that you've executed? Yeah, in my county, no, there is like a place called Southside. The Southside meant over there like full territory of gangs and everyone. So among all of the gangs, there was one gang who was like pretty scary. No one want to like mess with them. Okay. So we found the DOJ over there published a like announcement that if you find any criminals with class 2, you have full right to like raid their places. Okay. So as I mentioned, the gang was like too powerful, and I catch one of the guy doing some illegal work with a class 2 weapon. Then I apply for the raid, and it got approved. So then me as operator and my supervisor, we both executed that raid. There was 2 raid. First one was really hectic. It was like a lot of shootouts. So we were able to handle that pretty. It was like long shootout, like 1.5 hour shootout, but we were able to like suppress them and get out things. And second one, I thought like to do a initiation, like through like conversation. So conversation was like no bloodshed there, but we did our work. It was that is another thing that we didn't find anything, but there's no bloodshed and we conduct our raid and submit our report to DOJ. Okay. Just give me a second. I'm still just going through your resume also on this side. So how long have you been serving duty for? Me, 3.5 years. All right. Since you were an FTO, how many people have you trained under you? I cannot give you like exact amount. No, not exact I'll amount, give approximate. Assumption. Yeah. It can be like 18 to 25. Okay. What, like, when you're training someone, what are the things that you look at teaching them as a major 5 things? Like 5 things that you feel are the most important things to know when somebody just becomes a cadet. The first thing I try to establish that I'm his senior, that's correct, but I am not his enemy. So that he can get cool with me and share something, because in the hierarchy of our like cop system, there's like strictness. But when a cadet come now, he's like a baby. If you give a baby strictness, he will spoil at the end. But if you like able to get like मैंने like कैसे बोलते इसको, like उसका अगर ऐसे विश्वास दिला दो ना कि नो बट बेटा तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं. So he will able to like understand and willing to learn. बस पहले दिन में अगर किसी को चाटा भर गया ना, उसका मोटिवेशन गायब हो जाता है.
So yeah, first thing I try to do the thing, then I try to like teach the thing with a like long leap process. And to be more honest, so cadets in my past experiences, no, cadet liked me a lot, but I don't know the full reason because I never get the opportunity to take the feedback from the cadets. Okay, आप lieutenant rank तक पहुँचे थे after serving for 3.5 years. आपने why did you leave that department? So the criminals which were in the like city took over. They killed our like mayor. They took over. They destroyed the DOG building. They burned down everything. So they got control of it. Few outside energy also came in. There were nuke and everything. Submarine was there. So the chief justice said to us like it was his order as a last order to evacuate this place and find a better life. If you like उसका ये भी था कि if you like establish somewhere else, you can always come back and we'll regain our motherland. Okay. What are class 1, class 2 and class 3 weapons? Class 1 is like non-automatic pistols. Class 2 is automatic or semi-automatic SMGs, and class 3 is like rifles, automatic. Class 3 are rifles. It can be rifle, it can be sniper. It depends on how the bullet damages you. Do you know about the weapon called a PasKaLL? Yeah. Is it class 2, class 3? Class 2. Okay. Sanil, you can ask questions. You're a lieutenant. Feel free to available high commands. Is anyone interested to take the officer exam? You can contact Rane once as of now. We are in the middle of interviews. And sorry for disturbance. I'm in between served in the interview. BCS I'll contact department, you right? after it gets completed. Yeah, this is so department, but under SDSO. SDSO. So SDS and PBS have different SOPs, or they are meant to same under the ABCSO? Oh, they don't have the different SOP, but their working style was different. Because in the Sonora So desert they have area, a there's similar like SOP under BCS, which BCS mainly follows, and their Yes. sub-departments. ठीक. What was your work like? What all did you function mainly as an SDS officer? So our work is to like suppress the gang territory area, because in the county there's like less educated people. All they know how to escalate things. So our main work to like promote the education, awareness, technology to the cities, to the counties, and try to make friends, not enemies. But there are some interferences as well. There was a gang there called TLMC, the Lost Motorcycle Club. They are pretty much aggressive, and they had like a long turf under them. So How our did sheriff you over there. suppress this guy? Sorry. How did you suppress those guys? So our sheriff, because I name I'm not willing to share, he had an agreement that you should not escalate things in our society, and you do your work. But if you found out of your turf doing illegal stuff, we'll detain and go through the process of a law. So few times we got like hand-to-hand heated arguments and talks, but we never share bloodshed. That was like a diplomatic solution we did. Okay. So you have trained almost like 18 to 25 cadets, right? Yes. What is like main role of an FT on field? To teach the standard operating procedure to the newly born cadets. Except from the cadets. Sorry? Except from the cadets. ऐसा नहीं है कि सिर्फ cadets ही field पे होते हैं.
The multiple so- ranked officers are as well on the field. So you being a FTO, what is your So- main role? So my job was to like teach people, and the senior and the junior can give me like take me as a example, not me, like the FTO as an example, and they can like point out this thing, like if you don't know this thing, go to this guy, and then they will teach you. That was a FTO role in our previous department. Are you aware about the types of charges? Yes, I do. How many types are they classified into? I can like tell you from my state thing. Yeah, go ahead. So there was fraction, misdemeanor, then HUT. Any 5 Like, HUT charges? the crimes which don't have like a specific time or jail sentences, Yes, but any they are pretty 5 aggressive. examples of HUT charges. Terrorism, then when what do you say this? Give me a second. I forgot the English term of it, but it's like aag lagana, ghar pe. This thing. There are more to it, but I cannot recall this moment. What do you mean by larceny? But if you can explain more of the term, I can think something up. Not an issue. Is impersonating a judge a HUT charge, or is it like a normal misdemeanor? No, it's a HUT charge. Okay. Suppose you catch hold of a suspect who was impersonating as a judge. So what all paperwork will you go through and whom will you contact? So I'll arrest him. I'll put him under cells. I'll try to arrange a bench trial with the judges. I'll inform the judges about it. If not judges found, I'll hold in the cell for 24 hours. Then I'll try to notify the Chief Justice and the whole DOJ like command structure. Then they will decide what to do with them. What if you catch hold of that suspect and while you brought him to the cells you forgot to read his Miranda rights? If it's completely out of your mind to read him his Miranda rights. And he complains about it to his lawyer, and his lawyer takes it up at the court. So will you have to leave him and release the process? So there's two-way thinking of it. So I didn't read him Miranda rights. That's give him the chance to like speak everything I cannot use against him. But there is like two opinion to both sides. Some things all right, we didn't read this guy's Miranda rights. Let's not use anything he said. Let's use the fact or evidences we have against him. And if we follow that statement or mindset, we didn't have to release him. There is another mindset that people thinks like his basic right were not like read, so we have to let him go. So if that mindset was followed, he has to be gone. Okay. What are the types of evidences which are admissible अरे in मैं court? अरे चैट का सीन ये है यार कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ बाजू में, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ. Examples of evidences which you obtain from the field and are admissible to the court. One is DNA, bullet casings, on-scene photos. What are those there? In reference to DNA, what is the statute of limitation? It was 30 days. 30 days. Is a vehicle fragment admissible to the court? That is a controversial topic. It depends. What's your view on Depends on judges. Achha. And one other thing is admissible to the court if a cop is having a like body cam footage on him, the body cam with him, and the body cam like catches Body cam footages are admissible to court. Yes, but it has to be like record properly.
Have you personally like experienced a court case? Yes, I did. What was the नहीं मॉन्स्टर रुक situation? जाओ भाई, किस खत्म कर दो. That situation बहुत was चीजें like चल रहा है भाई. there was a chase. There was 3 interference vehicle. गाइस मुझे आधे घंटे में रिमाइंड कर लोगे I कि was मुझे in my पास खरीदना है. Explorer because it was like a A8 vehicle, so I didn't take my charger. So I was in my Explorer. The interference vehicle decided to ram me. Well, then I tried to tackle them and rejoin the chase. Then one guy fully decided to ram me under 140. Then I came out of my vehicle. Because my vehicle was flipped, so I came out of the vehicle. His vehicle was also flipped. Then I opened fire on that vehicle. For firing on that vehicle, he got injured, and he issued a case against me. So I didn't leave him. I fully processed him with all my evidences, charges. Then the case was filed. I was summoned. Then I gave my part of the story and give my body cam footages and my speedometer photos. Then I won the case. You won the case. Yes. So his vehicle was flipped as well alongside with yours, and you opened fire on him, right? That's the point. Yeah. Okay. It was like using a vehicle force against me. Okay. And highly speed of force. How will you It was escalate? clear, like it was clear, like it was 140 No, mph, not an like issue. meter. It doesn't matter. How will you escalate your force on a moving vehicle, like which you have been chasing for the past like 15 or 20 minutes, and he's like continuously a public threat, like threat to the civilians, is ramming poles and stuff. If I talk like in general opinion, I don't consider like breaking poles and everything as a like excessive use of force until he runs over some civilian or try to do some dumb shit which he's not supposed to do. And after a certain time, like after giving 5 or 10 minutes, if he's not surrendering, then it's depend on the like commanding situation and the situation who is he is currently in. Then the pit box and a spike should be used to escalate the force. Okay. You're an airborne pilot, right? Yes, I am. Have you faced any situation where you had to rappel down your co-passengers from the airborne? Yeah, a lot of time people like to camp in the certain places. There is no other way rather than air on. What are the key points which you have to like keep in mind while rappelling down your flight mates? So usually what I do in like rapping, I'm not like recalling the rapping, I hot drop them in like different situations. So there's 2 type of hot dropping. One, if I have like a cover of something, I land my airon over a covered place, and we like exit the airon fast as fast as possible. Then we take cover, then we fight back. Another one is like I hover around the safe area. I told my grenadiers to cover for them, and I left them in the like safe position, and they open fire. They take position and fight back. I go up and I hover around and give the information to to get a better outcome of a situation. But it's sometimes don't go our way because there was like extreme fire. It doesn't work like that. Part of it's like a machine. It's also have like oil and everything. It sometimes blew up. It happen also. I'm done, Rex. No, I wanted to ask. Like, doing so. No questions from my end as well. Chief. I think that's all for the interview. We'll let you know about your response in due time. Thank you for your time. Thanks for the food and thanks for having me. No worries. Can you show me out? It's like yeah, sure. It is a slight maze. Yeah. Thanks. मैं चले जाता हूँ अगर ठीक आ जाओ.
यार बहुत थका सा हूँ यार. Gym there, no? Yeah, actually we got a lot of things in this in the Vespucci PD. Right. So currently I'm in the third floor or the top floor? I'm confused. I lost count. Sorry? Oh, that was I the lost count how second many floor. floors I am in. That was the second floor. Second floor. Yeah. Man, it's too big. Too big. Like starting it took us also time to get adapted because it did feel like a maze, but once you are around, you just get the hang of it. Yeah. All right, that's the way. Thank you so much. Alright, have a nice day. You too. Stay safe. You too. Yeah. And do the better work. Yes, sir. Alright. Bye. यार इतना ज़्यादा काम है ना आज, इतना ज़्यादा काम है ना. मैं आज बहुत कम सोया हूँ एक्चुअली. And some yeah, that's all for now. So yeah, that would be about it. The main thing would be how to make an MDT, which I was not like it was not that sufficient enough. But yeah, the new one which you have been trained, like which I've been trained for recently, would be the most efficient thing I've learned here after coming. Do you have any feedback about your FTOs and your high commands? No, so like I don't have any complaints because it was as smooth as. Didn't पूछा ही नहीं, feedback पूछा. Feedback would be like they are well knowledge, like they know the stuff and they taught me to. Personally, I've been tagging along with Senit sir and Rex sir, like and Devdat sir. They've been kept me informed about stuff and also. Exactly, I told you in the first thing itself, the pursuit stuff. Right. Sorry, go ahead. Your department, your choice. I'm just going to be working on my tablet for like few minutes, okay? I'll be hearing things, but yeah. Before that, do you have any idea where Ron is? One director Ron? Send it. 20? Top floor, your office. From? He said top floor, my office. Sir, I have an office here. Sir, can you show me my office, please? Sir, office दिखा दो यार सर. समझ गया. सर ऐसा मत करो. नहीं सर, I want my office. तुम इधर रहो. मैं देख के. यार, send it. I have an office. I didn't know. दो लोगों का. मेरा office है ही नहीं यहाँ पे. चलेगा. Continue. Are you ready, SOP? Yes, sir. Thoroughly. No, I don't want to lie, not thoroughly, but I have gone through it. Any 4 amendments of your choice? Explain it. Any 4 amendments? Okay, I'll explain you the first one. No religious discrimination of any kind. Then the second one would be like you have a right to carry your weapon with proper paperwork or proper license and stuff. And third would be you can't enter anyone's property without without a warrant. Like you have to get a warrant from the DOJ department. And the fourth would be without Leo, you can't search or seize anyone's property. Yeah. Professionalism policies? Professionalism policies, like, what do you mean? Like you want me to tell like how to be professional? Like, yeah, like no weird hairstyles, carry proper accessories as Reframe. What do you mean by code of conduct? Code of conduct. Yeah, like where the uniforms you have been assigned for, maintain tidiness and proper accessories which you have given by the department to you, and use of the vehicles, use it properly. Do not be like just be dependent on them, not recklessly use it or destroy any thing given by the department to you. Examples: the cuffs or the guns or the tasers or the vehicles. Yeah. Chain of command.
chain of command would be to follow the Leo, who's a higher ranking than you, or the commander who's been taking the control over a situation. Yeah, follow him. Simple. Hierarchy of ranks in BCS. Hierarchy of rank in BCS. So, they are like deputy sheriff. Yeah, I wouldn't know that sound. Sorry. Who's your senior? You like sheriff. Solo cadet, right? Yes, sir. Probationary officer. Who's the deputy? Officer. Any one deputy which you know from the BCS? Deputy from BCS department. I've been hanging out with him, but actually I forgot his name. No, sir. Meaning of force of escalation? Force of escalation would be example, you're on a 80 on a normal A-class car and the Not on a suspects are... vehicle. Then? Force of escalation in normal terms. Force of escalation in normal terms would be to use your capacity to match the suspect's capacity. Rather explain it with the example of a shootout. Example, it's a shootout where the suspects are using class 2s, or example, suspects are using class 1s, and we are supposed to use class 1s, and yeah, that would be... What is match of force? Yeah, that would be match of force too. Then what is force of escalation? Force of escalation in terms of ammunition would be example, it's a shootout between PD and some criminal out there, and last 2 officers are remaining, and the safety is not well, and there are like 5 suspects like coming to kill you. And if you have authorization of a class 2, again you can use the class 2 there as the force of escalation. What are the levels of forces? Sorry? Levels of forces. Levels of forces in what aspect again? लिखा है SAP में there are levels of force. No idea, sir. Okay. There are 5 levels of forces. Okay. कोई भी याद है? Any of 5 levels of like 1, 2. No, sir. Yeah. Difference between probable cause and reasonable suspicion. Difference between probable cause and reasonable suspicion. Probable cause would be when you have proper evidence that this or she is committing a crime. Reasonable suspicion would be you don't have evidence, but you have a suspicion that him or he can be involved in that specific crime or area. With example now. Example, yeah. Example, you get a suspicious activity and you find a guy in that spot, and I'll give you example with the ranges, with the ranges unit. So you find a person and he's just hanging around there. So you have a suspicion that he or she is around the area where you got the dispatch call, but then again you wait for another call or something and you find the same person again. Now you can detain him or frisk him to to get a probable cause by searching him, or if you have a dog unit, you can like ask the dog to sniff of something which can turn into a probable cause by if he is carrying any suspicious things. Yeah, that would be it. Conditions on letting a suspect out on bail. Conditions of letting the suspect out in bail. He should have X into 3 of bail amount in his bank account. First of all, he should have a lawyer, and third, his crimes should be not major ones.
which involve terrorism or stuff. Yeah, I guess I'm not wrong. What are the types of charges? Not something like assault on multiple years or yeah, terrorism, something like that, which won't be bailable. ठीक है. Force of escalation on a vehicle. Yeah, force of escalation on vehicle would be example inspectors on a class vehicle, and force of escalation on a vehicle. Okay, yeah. So he suddenly switches into a GTR or a S class vehicle. Example, that time you switching into a faster speed enforcement would be force of escalation on a vehicle. What if the pursuit goes on for a while, like 15-20 minutes, and he's driving on the footpath, and he's a threat to public safety? How will Then he you utilize the vehicle? yeah, thanks to you, like this answer is because if I've been tagging along with you, that this answer would be going for slide bets on him, where you can get him by slide bets, and that would reduce the lot of damage he'll cause in the further time. Yeah, this one is exactly because I've seen you doing this to catch a suspect where he's terribly driving and railing on the traffic lights or footpaths. I'm fucking tired, guys. Thinking of putting out stream and coming back. Types of warrants. Types of warrants. Types of warrants are. One would be a legal warrant, one would be a search warrant, one would be a seizure warrant, one would be a bench warrant, yep, another would be fugitive warrant. That's all. An arrest warrant for Raj. Okay. Difference between a search and a frisk. Frisk could be something where you just touch a person's body to, I feel him up and know if he's carrying any metal objects which are pokey or mildred with something. Such would be searching the person thoroughly, including his pockets and stuff. Difference between arrest and a detainment. Arrest would be you arresting him with all the Miranda rights and taking him to cell. Detain where you'll be integrating him in the integration room where you only frisk him up. Yeah. When do we read the rights? After arresting, after cuffing him up. Why not while detaining him? No, because while detaining we're integrating him, so it doesn't matter, and he doesn't need a lawyer after getting detained. But he's still in our custody, right? Yeah, but he's still in our custody, but that doesn't mean he's under arrest. He has the right to speak with that too. Okay. Basic format of an MDT. So I've done MDT. You can check the evidence. Number. Shit. इसमें नहीं है, पुराना इसमें है. But I've done a FIR in which I've added you. For FIR you can check that. MDT ये नई वाली में नहीं है. पुरानी वाली में you remember we called body shutdown? Yeah, that was the one. If you want, I can make any one, like whenever you want. Yep. It's easy and it's simple. Nothing to worry. Breaching procedures of a 90. Recent procedures of 90. So I've not experienced a 90 over here, but I'll just try. I swear your book knowledge or previous knowledge. Yeah. Example, I'll give you a 90D because I've only experienced that one over here. That would be if you're entering a house, there should be 3 officers entering along. One who will see the rear right and rear left of their opposites ones, and the center officer will see his rear front, and you give out the call that, and you breach in at a time, so you can cover all the angles, and your officer risk is also careful. Yeah, that's all.
Suppose there's a house robbery, a store robbery going on. Okay? Yeah. You're the commanding officer of the store robbery. Mm-hmm. You're negotiating with the robbers in order to secure the hostage. You're negotiating And with the robbers. What? to secure the hostage. Yeah, perfect. Yeah. Mm-hmm. And apparently the hostage belongs to the strongest gang in the city. Okay. And the members of that gang hold Mm-hmm. another hostage and come at the crime scene, which is a Mm-hmm. store robbery, and they demand to exchange the hostage. What will you do as a commanding officer? So apparently the strongest gang is here with the hostage exchanger. Okay. So I'll try to. The first thing would be I'll give you two options. My first option would be asking them to not raise a chaos. Wait for it. We'll save both the hostages, one by one. That will be the least chaotic way. The second would be if they're chaotic and I have less officers on me, and they are carrying a lot of lethal stuff. That time I would be in a place where I have to exchange hostage, but there will be proper code of conduct over there where I have to manage very critically because it's two hostages. One would be a civilian, and yeah, the second option would be to exchange the hostages with the proper calls and stuff. Jake, you got anything to ask? No. You can take care of this completely. If I'm done with the exam, your response will be also. Yep, sir. Thank you so much. Can I leave? You can. Yeah, thank you. हाँ जाओ भैया. आता मैं 2 मिनट में. चले जाओ कॉल दे के जाना ऑलमोस्ट ये वाला काम हो गया. आई थिंक सो.
मुझे लकी का आवाज आया, मैं जा रहा हूँ सुनने। मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे एक और फ्लोर जाना है ऊपर। have freedom of speech, and so that they can they can speak freely and do not say anything wrong that can be presented in the court against them. Alright, so now tell me all the 10 amendments in short. So that would be hard because How many do you know? Sir, around 2-3. Okay, so जितनी आपको आती है उतनी बता दो. In brief. Yes, sir. According to First Amendment, everyone has a right to exercise their religion, and they have right to speech, and they can perform any activity that is legal and in the court of law, and it is also legal according to the our SOPs. Acha. As you use the word SOPs, like what is SOP and why is it necessary? So SOPs are standard operating procedures. Those are the it is kind of a rule book that is given to officers so that they can perform their everyday duties. According to it, it states that how the things are to be done, and what are the limitations, and what are the procedures of the things that are to be performed in the PD department. अच्छा, negotiation policies क्या होती है? Can you tell me? So negotiation policies states ki whenever there's a situation where you have to perform negotiation. For example, let's take it's a 1090 where a jewelry shop is being robbed. In this situation, there will be only two negotiating officers at the situation. Those negotiating officers will first of all introduce themselves and tell them what is their name and rank. After that, they will ask what is happening inside. And they will, if they ask, and like officer will ask if they have any hostage, and will ask for their presence, like for the proof of life. After that, we will ask them how many of them are inside, and how many are inside except the hostage. After that, we will ask them what is their escaping vehicle, and perform a 28 on the vehicle, and then give call on radio according to the situation. Such reasonable suspicion, probable cause में क्या difference है और frisk कब करते हैं, search कब करते हैं, वो भी बता Sir. देना. Okay. So, sir, reasonable. First, I will go with reasonable suspicion. Reasonable suspicion is a situation when like we have got a 38 call, and it states that there is some suspicious activity happening. We went there for investigation. Like there we see कि कोई बंदा वहाँ पे roam around कर रहा है, but we haven't seen him doing anything. This falls under reasonable suspicion. We can go talk to him, detain them, and we can frisk in the situation. After that, मैं आपको बता दूँ what is probable cause. Probable cause states कि we have got a call of we have got a 911, for example, that someone is trying to threaten and is trying to kill someone with a bat. So when we go there, we see someone having a bat in his hand and beating someone with the bat. This comes under probable cause because we have the evidence. We have seen them. We have seen them with our eyes. In the situation, we will arrest them and arrest them immediately, and we can search in the situation. अच्छा, force of escalation और excessive use of force में क्या difference? So force of escalation is when you escalate force. For example, for example, two officers respond to a 1090 happening like burglary.
we respond to a burglary. Okay, we go there and we see two suspects coming out of the of a house having a TV in their hand. And after that they go and they switches vehicle, and they are four now. They came out of the vehicle and and they have their bats in their hand and try to beat someone. So in this situation, we can escalate our force from lethal to class 1 firearm. In if they are trying to threaten us, like if they are trying to attack us. ये होगा सर force of escalation and excessive use of force होता है. We know कि there's let's go for vehicle this time. ठीक है, like for example there is a C class vehicle in front of us. They are like roaming around and हाँ ले रहा guys, ले रहा signals. pass ले रहा We ask them to pull over, but Thank they you do not guys, pull over. thank you guys. In this situation, and we call backup for example a challenger. In this situation, we are using excessive force there, where we should have used the Crown Vics, not a challenger. Okay, so are you aware what a bail is? Like, what are the Yes. bail policies? Can you tell me anything? So bail policies, I know everything. Bail is not a fine. It is a type of deposit that states that the person who have given the bail amount is liable to perform like is liable to appear in court in next 48 hours and file a case against the PD or whatever he wants in next 48 hours. And if he do not appear in the court, he shall be arrest warrant shall be issued under his name, and he should be arrested, and the bail amount is not to be returned. It comes under his arrest warrant fail to appear on the court. अच्छा, so मान लो कि आपने किसी को bail दिया and yes, he failed to appear in the court. So what is gonna be the charge that you're gonna press against him? Sir, I will go for fail to appear. Like जितने भी उसके charges होंगे, we will also add one charge which is fail to appear, fail to be present in the court. Fail to be present in court. Okay. Yes, sir. तो आप मुझे ये बताओ use Sir, of force क्या like, होता है जो and नाम what are होता the है ना, कोई क्या बात कैसे? नहीं कोई बात नहीं. Use of force क्या होता है and what are the different levels of forces that you have? So use of force is a situation when we use our force to utilize or control a situation. Our main forces are like first of all हमारी main force first force होता है, it is voice. Second is क्या नाम है, our hands or like our physique. Third will be not non-lethal, and fourth will be lethal. And yes, yeah. अच्छा, so you might be aware that we have class 2s in our armory, right? So when can you use it? Sir, first of all, the class 2s are to be used by the high-ranking officers, or when it is authorized by the high-ranking officer, and it should be only used in very emergency situation where like it is very life-threatening, and like the class 2 is being used by the other party also. अच्छा, narcotics के बारे में पता है आपको? Sir, little bit. Little bit. Can you just segregate them into classes? Negative on that. Okay, no worries. आप मुझे ये बताइए force of escalation किसी on foot chase में आप कैसे करते हैं? Sir, on foot chase में first of all we just tell them to surrender when we are chasing them. After that we go for around two tackles. After that we tell them to stop, and we tase them for 2 times, and if they still do not stop, we use our batons. Sorry, so have you ever heard about criminal rampage? Yes sir, I have, and I You heard have? about it recently. Okay, so मान लो there are 2 to 3 cars at Legion Square. They are using throwables against you. How will you match force on that? Like throwables? Yeah, Like like grenades Molotov, and C4. mods. Yeah, Okay. yeah. On the situation, we will I'll call for a backup first of all, and we'll try to neutralize the suspects who are committing the crime. How will you match force with them? That's Match what I'm force, asking. okay. I'll go for sir. I don't know this question. You don't know? Okay. What is statute of limitation? Our statute of limitation states that the
that evidence have 30 days of the 30 days of you have 30 days to present it in the court. After that, it is not valid, and you have to take Chalo it away. guys, ultimate passport. According to the Constitution of Los Santos, what is the statute of limitation for felony and misdemeanor crimes? Sir, that would be that I won't know. Guys, Okay, मुझे can you segregate कोई and Jake differentiate Williams between का phone number felony, recommend कर सकता है? misdemeanor, infraction? Yes, of course. Infractions are the type of crimes that that are not that severe. For example, a simple traffic break and evading. It comes under the infraction. Misdemeanor consists of mainly. Hello, sir, आवाज आ रही है मेरी? हाँ कंटिन्यू आ रही है बिल्कुल. Some misdemeanor would be GTA 101. and दो digit रखना and trying to threaten someone. And so felony comes the charges comes under felony are trying to murder a government employee or giving threats to a Leo and attempting murder of a Leo and attempting a robbery. These all charges comes under. Okay, petty so theft जो होता है, रुक जा मेरे 2-3 क्वेश्चन और है करके. क्या सर? हाँ, petty theft जो होता है वो misdemeanor है या felony? Sir, it is a misdemeanor. Okay, misdemeanor. ठीक है, तो मेरा 2-3 और क्वेश्चन है, उसका आंसर करना, ठीक है? ध्यान से सुनना अभी. मान लो एक शूट आउट होता है only, ठीक है? And they are using like pistols. You manage to down them. आपकी कोई भी casualties नहीं हुई. When you are processing them, there are 2 charges: assault with a deadly weapon and attempted murder of a government employee. कौन सा लगाओगे? Assault with a deadly weapon. Why? Because none of the officer were shot down and were in life threatening. Still, isn't it considered attempted murder? Sir, like officers, like they try to save themselves shooting. It of course is like a crime, but they have sir, क्या question था एक बार? Can you repeat? एक शूट आउट था, उसमें आपने सस्पेक्ट्स न्यूट्रलाइज किए. देयर वर नो कैजुअलिटीज फ्रॉम योर साइड. सो बेसिकली 2 चार्जेस है आपके पास: असॉल्ट विद अ डेडली एंड अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कौन सा लगाओगे और क्यों? ये पूछा था मैंने. Because they failed to मतलब उन्होंने कोई भी ऑफिसर को डाउन नहीं किया and they just try to like they just started shoot out and they did not harm any officer and they all were neutralized by the officer. So we will press charge of assault with a deadly weapon. Okay, there is a technique in our SOP called pit box spike. वो कब ऑथराइज होती है and वो क्या होती है? Can you tell me? Sir, क्या बोलते सर आपने? पिट बॉक्स स्पाइक करके एक टेक्निक होती है अपनी एसओपी में. वो कब ऑथराइज होती है और क्यों होती है, बता सकते हो? सर आप लाइक मैं इन तीनों को अलग सेपरेट करूं या फिर एक साथ ही बताना है? तुम्हारे ऊपर है, वो आपको जैसे बताना हो. हाँ सर, मैं सेपरेट बता देता हूँ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल, पिट इज अ पिट स्टैंड्स फॉर pursuit intervention technique. It is performed when a vehicle मतलब जब कोई व्हीकल ज़्यादा चेंजेस हुए हों या फिर द ड्राइवर इज थ्रेटन टू द सोसाइटी लाइक द एनवायरनमेंट and is destroying the public property and is harm to the civilians, and we perform a pit maneuver when it is मैं आपसे वैसे मतलब बता देता हूँ. सिटी के अंदर it is performed when the vehicle has a limit of 80 and it is not to be performed in a place where they like बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, या it is not to be performed there. And it is 120 speed for the highways, and it is performed when like yes I already told. उसके बाद सर मैं आपको बता देता हूँ box situation when we box a vehicle which is like trying to evade and it is causing ruckus. और उसके बाद सर you क्या था थर्ड वाला, क्या बोलता आपने? Pit box spike. Spikes are deployed when
when a vehicle is trying to evade and have like for example has changed many vehicles or is threatening to the civilians, we perform like we deploy spikes in the three lane road, and it is only allowed for the officers and above to like the deploy spikes. अच्छा, कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने परफॉर्म की है अभी तक? Sir, for now, no one, nothing. तो do you know what preliminary investigation is? पता है आपको क्या होती है? Sir, I have some knowledge. तो एक काम करो, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस बताओ। सर प्रिलिमिनरी और दूसरे कौन सा था? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन। Sir, preliminary is a investigation where we collect the evidences and try to get a knowledge of the situation and try to situation like उसको investigation को आगे बढ़ाने के लिए start करने के लिए collect evidences so that आज स्ट्रीम करते करते मैं काम भी कर रहा हूँ। मतलब like sir मेरे को इतना ही पता है इसके बारे में। Hollow, I don't know about the hollow. One last question from my side. Yes, yes. Evidence collection की policies क्या होती है? Tell me any five. Evidence collection की policies क्या होती है? Sir, that I will know. ठीक है, that's all from my side. Ron and Zach, go ahead. Okay, so I had only one question. जब misdemeanor का बात आ रहा था तो there's a same misdemeanor and a felony charge, but you हाँ कोई ना कर लो आराम से। ठीक है मानता हूँ ठीक है मानता हूँ। ये अच्छा था ऊपर एक कोई सीट नहीं यार, करो तुम बात आराम से, फिर वेट कर लेंगे हम। खत्म भाई जी। अरे यार ये अच्छा था। ये सर बोली। हाँ तो there is a same misdemeanor and a felony charge, but you differentiate on the quantity that person is carrying. ठीक है, वो कौन से चार्ज है या एक कौन सा चार्ज है वो बता सकते हो? Sir, possession of controlled substance. ठीक है। Okay. I have no questions by the way, just saying. ठीक है। ऑफिसर आपका बैच दिखा देना एक बार। बैच एक सर। नो आया, ठीक। कुछ क्वेश्चन है रॉन? ठीक है सर, आपका evaluation complete होता है। Just wait and watch for the. You'll get notified for the response. Okay. Okay sir, thank you. कुछ क्या लगता है? मैं तो बस खड़ा था बड़ी honestly. I don't want. मैंने जितना सुना ठीक ही था, बस वो क्या कहते हैं वो फॉलो अप और प्रिलिमिनरी नाम से ही पता लगता है, बट ठीक है, he tried. It was. कोई ना. At least he was honest. He was like, I'm not aware. हाँ, he tried and like he managed to cope up थोड़ा सा प्रिलिमिनरी में। हाँ। मुझे कोई नंबर रेकमेंड कर सकता है? कर देता हूँ, एक सेकंड दे, इसका कर दूँ फिर तेरे को नंबर। मुझे भी करो। फोन नंबर। मुझे भी। करूँगा रुको एक सेकंड। इसका वो क्या था? छी भाई, that is so cringe bro. That is so cringe. इसका वो क्या था? नो आइलैंड। मेल एक्सक्लेमेशन लकी। ठीक है, एक्सक्लेमेशन है ना? अभी डाल दूँ? नहीं रुक, साथ में लेंगे। साथ में क्या? ठीक है, तो मैं वहाँ डाल के रख देता हूँ। मैं क्या बोलने वाला था? हाँ रोल में कंफर्म कर लो ना फिर वो। कर दो। अच्छा हाँ वही वाला कर दो। हाँ भाई मुझे तेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। क्या बोल रहे हो? काएगा obviously dude। क्या हुआ? अच्छा that's too good। पहले पता है मैं सोच रहा था उसका। किसका? ये
ये रोन को फायर करो भाई। अरे मैं वही ना। सुना नहीं, मैं कुछ check ऊपर कर रहा ऊपर था। ऊपर ऊपर देखो ना टॉप लेफ्ट में। टॉप लेफ्ट में। नहीं तेरे को पता है जेक, अच्छा, वो नहीं वाला। मैं सोच रहा था वो लेने का, पर कोई बात नहीं। हाँ तो वो उतनी अच्छी चीज है, समझ रहे हो? रात वाला जो हाँ। दिखाया वही वाला Yes, करते हैं yes. या फिर और ऑप्शंस देखने हैं? तुम का ये वैसे चीज बोल क्या रहा कह है रहे हो, वो? कल हमने 64 के कमाए भोसड़ी के कुछ, क्या बोल रहा हूँ मैं? 64 के कमाए। भोसड़ी के जीटीआर लेके फ्लेक्स करते हैं लोड़े। हाँ पर एनीवेज आई कांट काउंट दैट क्योंकि उस पे मां सगास हुआ है मेरे से। मां सगास। नहीं नहीं वो वन ऑफ माय क्लीनेस्ट था, सच बोलूं तो। कोई नहीं, तुमने जो आई डिडंट इवन फक अप। तुमने जो लिखा है उसमें से +2 ऐड करने के एक बाद जो second. आते हैं उसके बाद देख। तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? नहीं कल हम चला रहे थे चैलेंजर। LMC वैर नो पा। हाँ तो हमने जो मेरा सेकंड लैब था एकदम स्मूथ, एकदम नहीं, कुछ फकअप्स थे छोटे मोटे बच्चों, लाइक 1-2 सेकंड का लाइक वो होता है, एफ होता 1-2 सेकंड का। फिर हम आ रहे थे ग्रेप सीड से वापस सैंडी की तरफ टू कंप्लीट लैब। इफ आई कंप्लीटेड दैट लैब आराम से हो जाता था अराउंड 424। सामने से एक ट्रक आ रहा है, मैं सीधा जा रहा हूँ, वो राइट लेन में, मैं अपने साइड से राइट लेन में, अचानक वो दूसरे वाले लेफ्ट ले लिया। Oh my God. और उधर फिर वो लैब एफ हो गया और फिर बाद में 428 हो गया, वो अलग बात है, पर दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड लैब। वो मैं समझ रहा हूँ। तो वैसे गेस कर मेरा चैलेंजर कौन से लैब था? सेकंड। यस सेकंड में निकला। ऐसा बोलो कि पता ही नहीं चलता, ऐसा बोलता है कि वो सब छोड़ यार, अगर मैं तेरे को बताऊं, मैं लिटरली बाकी के पास करता इजी 422 निकालता मैं। एक काम करना, जब भी फ्री होएगा हाँ मैथ्यू को कांटेक्ट करके 7 लैब्स कर ले। निकाल दूं ना एक। हाँ वही नो आई जस्ट बिकॉज़ आई वांट लाइक ओह माय गॉड। हेलो देशकर भाई।
गाइस मैं स्ट्रीम बंद कर लूँ अभी के लिए और बाद में चालू कर लूँ रीस्टार्ट के बाद जो सब है. MVP लगा फ्री स्टार्ट. हाँ मोस्टली यस. गाइस आज मुझे बहुत रिकमेंडेशन चाहिए रहेंगे. हाँ अभी से ही बोल रहा हूँ. आज मुझे तो पता है अभी मुझे ये महीने ना मुझे जज कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा, प्राइवेट लॉयर कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नंबर चेंजेस है ताकि मैं सबके नंबर बदलूँ. क्या प्राइवेट लॉयर पैट्रिक्स कल? और आप छाप रहा. हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन यू मेक? आई डोंट नो बट आई हैव 4 कैरेक्टर. HTRP में आई हैव 4 कैरेक्टर्स. और जज, और प्राइवेट लॉयर, और क्रिम कॉप. And I just bought the ultimate pass. Yes, I have a private lawyer too. Chalo guys, I'll be back in a while, okay? Like, subscribe, share. Nothing for a ride along. See you guys soon. 444 should be 10-7.